जोशो जुनून का काफिला सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम, मैदान में अब जित जाओ रे, मैं अब जित जाओ रे। हो आ गया पेंडिंग, देखते हैं कि अंपायर का फैसला क्या है। दोनों अंपायर आपकी स्क्रीन पर, तीसरे अंपायर के डिसीजन के वो मुंतजिर हैं कि उन्हें क्या हदायत दी जाती हैं टू मेक द सिग्नल। बैट्समैन विकेट के वस्त में खड़े हैं और नॉर्थ नवाब की टीम यकजा होकर गुफ्तो शनीद करने में मसरूफ है। सी इट अगेन, एक बार फिर हम देख सकते हैं। अ वेरी फेयर बॉल, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छा अंदाज उनका गेंद करने का। गेंद गुडलैंड स्पॉट से भी पीछे गिरी थी, एक तरह से शॉर्ट पिच गेंद हम कह सकते हैं, और उसके बाद काफ़ी गेंद ने ऊंचाई इख्तियार की। बैट्समैन ने गेंद को स्क्वायर लेग मिड विकेट पे मारना चाहा था। लगता यही है कि गेंद लगी है उनके शोल्डर पर, बट लेट्स सी कि क्या फैसला आता है। आई थिंक कि अंपायर ने बैट्समैन को कहा है कि आप जाइए, और तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया है। लेकिन बैट्समैन स्टिल स्टैंडिंग हिज ग्राउंड, और नाउ ही स्टार्टेड टू मेक हिज वॉक बैक। तो विकेट, बड़ी काफ़ी डेलिब्रेशंस, काफ़ी देर की फैसला अंपायर ने दिया है देखने के बाद रिप्लेस, लेकिन आया फील्डिंग साइड के हक में। तो लगता यह है कि गेंद पहले बैट से लगी, फिर शोल्डर पे लगी, और 16 रन बनाकर छोटा विक्की आउट। नए बैट्समैन ग्राउंड में पहुंच गए हैं। 2 विकेट गिरने के बाद DHA दबंग्स पर यकीनन थोड़ा सा दबाव है, और इस दबाव को दूर करने के लिए यकीनन एक अच्छी पार्टनरशिप भी चाहिए। मोहम्मद हसनैन बैटिंग करने के लिए आए हैं, राइट हैंडेड ये बैट्समैन हैं। फरहाद जो कि विकेट लेने में कामयाब हुए, एक एज लगा जो कि विकेट कीपर के ऊपर से गुजरा, मगर अगली ही गेंद पर उन्होंने दोबारा विकेट हासिल की। और बड़ी तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद विकेट कीपर के पास। नॉर्थ नवाब्स की बड़ी उम्दा कारकर्दगी अब तक। अरसलान नॉन स्ट्राइकर हैं और उमर हैं स्ट्राइक पर। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। जितनी तारीफ करने कम है। थ्रो विकेटों में अगर लगता तो बैट्समैन फ्रेम में भी ना होते, बचे चुके बराह रास्त गेंद विकेटों पे लगी नहीं। लेग बाय का इशारा अंपायर का, ये हम देख सकते हैं। थ्रो बैट्समैन क्लोज था, इनफैक्ट अगर लगती भी तो बहुत टाइट होता और इवन पहुंच जाते थे। आई टेक माई वर्ड्स बैक के फ्रेम में भी नहीं होते। टेक्नोलॉजी जो है वो सारी चीज़ें वाजे हो कर देती है। एट टाइम्स योर ऑब्जर्वेशन कैन गो रॉन्ग एंड कैन गो रॉन्ग बिग टाइम। आखिरी गेंद बाकी रह गई है तीसरे ओवर की। और इस गेंद को एक जेन्युइन टेस्ट मैच बैट्समैन की तरह स्टेयर किया, और टेप बॉल में ये स्टेयर देखना बहुत रेयर है। 1 रन हासिल हुआ। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 31 पे 2 DHA। तीन ओवर्स का खेल मुकम्मल, 31 पे 2। कमेंटेटर्स में तब्दीली, अब आपके साथ के आसिफ और फर्रुख रियाज। Thank you very much, Rana, Ashwaq and Nadra. So 3 overs have been bowled, 31 for 2. DHA Debunks
batted first after winning the toss. Current run rate is 10.33. It's not that much high. It's not quite encouraging for the overs to come now. So over number 4 is about to begin. Arsalan on strike. Try to work towards the onside, just single taken. And I welcome K. Asif in the comm box. Thank you, Farooq. And DHA Debunks, they won the toss and decided to bat. Surprisingly, first time in this tournament so far. You know, the captains winning the toss, they opted to bowl first. But I think after rain, there was a break of 2 days. They would have to think about this, and they, you know, the behavior of pitch, each and everything does matter. Trying to hit that hard. And you rightly mentioned out, direct hit there, and couple of runs more. And Farooq, this is really amazing when we see that the tape ball and people are coming with the average of 10.32. Not impressive, isn't it? Of course not. Credit goes to the bowling side as well. And 10.3 is just like the run rate of 5.5, 5.6 in hardball cricket. Certainly, DHA Debunks has to pull up their socks now because not many overs are left. They need big overs of 20 each from here. But this over has been quite good so far. Just a couple of singles have been conceded. Zabiullah 1 for 17. Not bad figures. Full toss delivery, dispatched nicely. It's over mid-wicket for the maximum. What a shot that was. Much needed maximum. Omar took on the Zabiullah in style with a full toss on middle and leg stump, asking to be hit. And it was a juicy delivery. He made most of it. Beautifully played. Asking to be hit, really. So the juicy delivery, and he cleared the shot up out of the boundary. Well played. Perfect timing from this Omar. He is on 8 not out. 3 deliveries remaining of this over. Slow delivery edge and should be taken. What a dolly catch that was. It was a good comeback by Zabiullah. A change of pace and a change in result as well. Zabiullah tested the batsman with a half volley outside the off stump. It was a slower one, and change of pace did the trick. He knows it. He was trapped, and Zabiullah has got a well-deserved wicket here. He was impressive with the runs he conceded. Just outside the off stump, length was good, and it was tried to heave towards the onside, and comfortable catch in the end. Omar Bhai having word and departing now after hitting a maximum 8 or just on 5 deliveries. Yasir Mushtaq, captain of DHA Debunks. Normally he bats on number 3, number 4, but sometimes we have seen him to batting as an opener as well. I was talking to him during toss, and he was quite hopeful that we could touch 90, 100 while batting first, but I think their team is in trouble. Outside the off, and the big wide is lost at Rida Zabiullah. Just to mention about the score, 90 odd runs there, so it could be competitive. But when you come out to bowl, if you bowl in a nice and tight line and length and don't drop catches, so anything around 90-95 could be a match-saving or match-winning innings, match-winning total. So here the bowlers have done quite well, I reckon. Big shot, grand shot, way up in the air, and that's gone beyond the boundary. Wow. Arsalan is on fire now. Look at that shot. Once again, it's an over-pitch delivery. Hitting nicely. It's going and goodbye. Thank you very much. What a brilliant shot that was. Once again, try to
smash out of the park. He's absolutely livid with himself. So over bowled is an eventful over. 4 gone, 48 for 3, DHA Debunks. See, dot deliveries. DHA Debunks, 4 overs, 14 dot deliveries. 5 maximum with 1 boundary. So credit goes to the bowlers of North Nawab, the way they are coming up. And Zabihullah, if you have observed in the last over, the way he was using his fingers. And so as I was discussing that the 14 dot deliveries for DHA Debunks, you know, it does matter when you're playing with 6 overs of match. Yes, of course, 14 dot deliveries and 24 balls have been bowled. So exactly 4 overs have been bowled, I reckon. So, and they also got 6 singles. So in the space of 20 balls, they scored only 6. And I was talking about Zabihullah, 2 overs, 31 for 2. He was using his fingers, and before the match, I was talking to the captain, and I was mentioning that the bowlers in KTPL second edition, we haven't observed that they're coming up with the slow deliveries, change of pace. So I think today they've heard, and they're coming up with the same pace. But sometimes you're coming up with the slow deliveries, and it could be really useful. Absolutely, in all forms of cricket, the change of pace has impacted a lot. So bowlers have to come up with superb skills of changing the pace to disguise the batsman. They have a number of ways to deceive the batsman, like with a scramble seam or back of the hand delivery or off spinner. So Yasir Mushtaq is the skipper, will face for the first time now. Farooq, Yasir Mushtaq is a first-class cricketer. He played lots of cricket in Karachi, grade 2 cricket as well. Plenty of experience. Off the mark with the single. We have quite a few names. He is DK, and he's the owner of DHA Debunks. Arsalan back on strike. It's very important for Arsalan to remain on strike for so long. As down the leg side, it's at the big appeal for. Oh, it's a wide given. Well. We have to wait for the reaction for the bowler. They thought they've got a contact from the bat, but in the end, the wide given is straight away by the umpire. Yes, it was a wide delivery, and of course that Najib was asking for the got behind. And in tape ball cricket, we've observed lots of question against umpires' decisions. But this is the learning process, and credit goes to Badar Expo Karachi tape ball Premier League. The way they are arranging, and and dropped. It was a good effort, but actually looking for two, and run out. It was a directed. Tremendous work that. Well, the skipper Yasir Mushtaq is out, run out. He had to go for a run there. Not many balls are left, so I think he had to sacrifice his wicket. Somehow it was miles away. So very famous phrase we have heard: never run on an overthrow. Well, I think it's a silly decision. I mean, you're just looking for single. You have taken already, and look at that effort. Here's the 𝐒𝐞𝐫, the captain of North Nawab. Look at that effort. Wow. Brilliant work. Away. Here's away. Yes, it was a simple decision, of course. Departing back. Yasir Mushtaq. Oh, that was the Rabada. I beg your pardon. And another loss, and a big loss for DHA Debunks. Down the leg side, wide again. They need some extras, DHA Debunks. They are struggling to creep up the run rate right now. It's very important that the man on screen gets maximum strike till the last ball of the innings. Look at the run out.
It was dropped catch, and that was the captain actually on the other side. This time hitting straight away. That was a very good shot. A fielder tried well, but it went like a rocket. Wow, what a tremendous blow. It's a terrific strike by Arsalan, hard and flat, wide off, long off. And just for a second he thought he had a chance, but it was struck so hard. Number of shots we have seen, the high shots and gigantic shots. It was something extra special. Brilliant shot. It was right out of the middle of the bat, and Arsalan is getting dangerous for North Nawab. 16 not out on just on 7 deliveries. And it's high in the air, but safe. And another boundary towards the third man boundary. So fortune favors the brave. Arsalan once again tried to work to the onside as he has to attack on every ball. So massive outside edge. In the end, he earned a boundary. So the runs are coming now for the Debung. The shot is tough. He had to hook, but there was no man down there at the boundary. So 10 runs of the last 2 balls, Kiasif. High in the air, somebody wants it. Will he clear the boundary? Yes, in the end, he has got a boundary. 2 men converge in the end, but it got another important boundary. Arsalan moves to 24 now, and it's turning out to be an expensive over. Yes, once again, it was a good delivery, not a bad delivery. Trying to hit that ball over the fine leg and landed safely. So there are the restriction. You'd have to keep 4 fielders inside the circle during all the match, and 2 overs for the power play. So that's why these 2 fielders on the third man and the fine leg, they're in the circle. Down the leg side. Another extra delivery with 2 runs. This is turning out to be a very healthy over for DHA Debung. The last 2 shots they played, one towards the third man, what was a top edge, and one towards the fine leg. So both were missed time shot, but certainly luck favored Arsalan and DHA Debung. Big shot to the offside. That's gone for 4. He tried to work towards the onside rather, but in the end, good result. 5 overs gone, 74 for 4, DHA Debung. Look at that shot. Trying to hit that over point. And a couple of bounces and then over the ropes. It's a very good over for DHA Debunks. And that was, you must say that if you talk about this Arsalan Archie Butt, he's from Gujranwala. And when we talk about this Meram Ali group, they are doing such a fantastic job here. Yes, of course. It's like a colorful event, and everyone here is doing a great job here to add the value. And in the meanwhile, there's a fireworks from Arsalan, the Mubashir, who will face his first delivery, and Badar will bowl his first over and the last over of the innings. Well, I'm amazed that he's bowling just first over. He's from Lahore, got the good reputation in tape ball cricket. He played for Lahore Qalandars Players Development Program as well. And his bowling action is quite similar to 𝐒𝐞𝐻𝐭𝐞𝐦𝐻 Rabada. And it's going towards boundary, towards fine leg. Fielder is there. Looking for the third. It's it's hesitation, and thank you very much. Another run out. Oh, yeah. Well. I think Mubashir has sacrificed his wicket. Yes, he had to run. He wasn't prepared initially to sacrifice his wicket, but at the last instant he had to go, as his partner Arsalan forced him to leave the crease. So he's not happy with himself. So another run out in the space of few overs. The throw wasn't good. And in the end, massive confusion, yes or no, and easy run out in the end. Well, this is called, that where your player, Mubashir lefty, gone on 2. Your player like Arsalan Archie Butt, he's in good form.
in previous over, in last over, he was quite good with his boundaries, got 3-4 boundaries, a maximum. So I think that's why he wanted to back on the strike. Oh dear. That one really took off. Well, actually, the good thing is, that he's trying to do something new for this nice. I think it won't cost their team, though it's a wide delivery, 2 runs, but at least he's coming up with a new delivery, variety in his bowling. Worked away, there's the man down. Oh, good catch. Really good catch at the boundary. Superbly held. And Arsalan can't believe it. He has to go. He tried hard to clear the boundary as he had to. It was the last over. So it's a fine catch. Fine catch. And one of the best catches, I reckon, in the competition. Well, look at that. He was there running and taking so nicely. This is called that he kept eyes on the ball and safely taken. It was a very good catch. You rightly said that. So Arsalan, Ajibert, he is departing now. The new man in Qadir. $78 for 6, DHA Debunks. They won the toss, decided to bat first, and I think they are shorter than 10-15 runs so far. They got 4 deliveries now. Now they have to finish strongly. They need at least a couple of sixes. Let's see, they have to go after the bowler. The main batsman, the established batsman Arsalan, has walked back. And his partner Mubashir has got out a few balls earlier. And did you notice, Chaos, when Mubashir came to the dugout, he got the appreciation as he sacrificed his wicket. And not very often the batsman comes back to the dugout after scoring 2 or 3 runs, doesn't get much appreciation. Not off the middle. So they have struggled a little bit as far as finding the middle of the bat is concerned. Arsalan plays some lovely shots, but some stretchy shots as well. Some top edges earned him a boundary though. But on few occasions he mistimed, and that is why he couldn't clear the boundaries or got 4s instead of 6. However, 2 fresh pair of legs, just 3 balls left. Inam will be on strike now. Oh, it's a very good delivery. It's a very good and quick delivery. Once again, a direct hit. And I think another run out. All right. This is all drama happening here at Asghar Shah Stadium. Badar Expo presents Karachi Tape Ball Premier League, and that was the dugout of and I'm telling you, DHA Debunks, they're not happy. They're not happy at all. They're not happy with themselves, I think, because 3 runouts we have seen, and there's some serious lacking of miscommunication here, because maybe they were not aware, maybe they are not prepared to convert 1s into 2s or to run instantly after the misfield. So I think third umpire has been called for as maybe they are confirming who is run out or not. Maybe they have dislodged the bails on both ends. Yeah, look at that. It's a legal delivery. It was a very good Yorker. He hit directly, direct hit, always very dangerous. Yes, thank you very much. So no run there. I think Qadir would have to depart. Yes, on both of the ends. Comedy of errors, Asif. We are fortunate we are commentating right now, but not very often we see number of runouts in 3 to 4 inside 3 to 4 overs, and 2 runouts we saw on just a single delivery. So it's a historic over. Look at that timeline: 2 wide, then 2 and then wicket, 2 wide, then wicket, then 1, and then wicket. Amazing. Badar. And I think it was a dot ball because it was run out at the batting end. Yes, correctly mentioned that. It was a dot delivery. Rabada again. No timing, no contact. Could be another run out again, I think. So lots of errors, and could be run out again. Oh, it's a fumble.
What else you want, Asif? Everyone is amazed. Everyone is amazed. Khurram Rabada is not happy at all. Look at that. Now they're smiling. They're smiling. They should be worried because just lots of things are happening in the middle. So eventually they are smiling. And misfield, the fumbles, and some yes and no's while taking a run. This is the beauty of tape ball cricket, Farooq, and we enjoy in the street. Whenever we play tape ball cricket in street, you know, and the run-out phenomena, it's very, very common in tape ball cricket. And they have lots of wickets in hand, so they can sacrifice a wicket. Finally, could be last ball of the over. Leading edge, should be a catch. Gone. So finally, 6 overs have been done and dusted. 8 down for 82 after the completion of the innings. So comfortable catch. So lots of leading edge, lots of run-outs. In the end, a good effort by North Nawab. This is how the last wicket fell in the last ball. He worked. He tried to work towards the onside. In the end, a comfortable and easy catch. So scratchy innings in the end, but not a bad score, I reckon, on the board. 6 overs, 82 for 8, DHA Debunks in their first innings. All right, you can see that Jawad made 3, Zishan none, Rabada very good, and Khurram and Vicky Chota 16, then Arsalan Archie 28, Omar Bhai 8, and then 1, 2, Duck and 1. 82 for 6. They were just trying to get 80. So I think 80, 90 would be okay, but the extras were 17. Bowling card we have: Faraz 1 for 14, 2 for 31, Zabiullah Najib, none for 26, and 2 for 8, Rabada. So exactly after 6 overs, with the help of 17 extras, they posted 82 for 8. All right. Well, this is the beautiful scenes of the Karachi, the city of lights, and the city of joys and happiness, and of course, that we are enjoying in Karachi. Fantastic. That's a famous spot of domestic cricket. Lush and green grass as a cover. The creators and groundsmen did excellent job. And finally, we are back with live action after a couple of days break. DHA Debunks versus North Nawabs. DHA completed their first innings. They won the toss, decided to bat first, and surprisingly, it happened first time in this Badar Expo Karachi Tape Ball Premier League second edition. We are observing that captains winning the toss, going for the bowling first.
These are ready. Welcome back to the Asghar Shah Cricket Stadium, North Naya Nazmabad, Karachi, where the match is happening. DHA Debunks taking on North Nawabs, and here are the two openers. They will start the innings for North Nawabs. They bowled extremely well. They were absolutely bang on target, although DHA Debunks started off their innings with a massive 6-over covers. But they made a terrific comeback by taking wickets. Fahad Mia Chanu, another popular name. He's an aggressive batsman and can go after the bowling right from the word score. Atmosphere and the weather is absolutely pleasant today here in Karachi. And we have a very fine evening. Khurram Chakwal, the captain himself, is captaining the North Nawabs. And North Nawabs have a big name of Pakistan cricket and international cricket, Shahid Afridi as their mentor. While DHA Debunks have got Yunus Khan. Mohammad Hasnain will start the bowling. And he's a very fine bowler. In first innings, DHA Debunks didn't bat too well. But I think it's a cricket. If they bowled extremely well North Nawab, then DHA can bowl well as well. Here's the first ball. Mohammad Hasnain runs away. And batsman has caught that away down towards the fine leg boundary. Fielder is running after the ball. He gets there, very near to the boundary. And in the meanwhile, batsman started his innings with a couple of runs. And Fahad it is, who took the first ball and who got a couple. They are trailing by 80 runs and they've got 35 deliveries left in their innings. And Fahad and Khurram both can do the damage, particularly in first couple of overs. This one is pulled away but well stopped at the fine leg. He pulled it round the corner. But there was a man right at the edge of the circle at fine leg who cut this one off quite nicely and restricted the batsman from taking any run. Hasnain bowled well so far. Both deliveries were right on target. Let's see what the batsman has in his mind for this one. And he has skied it. It could be caught. Fielder is paddling back a little bit. Oh, and put down an easy one. Put down an easy one. That should have been held even by the boy or child of 6 or 7 standard. Oh, my word. I think 5th class or 4th class student would have taken that. And Jeffrey Bygard would have said, my grandmother would have taken that. There you see it again. That was in there for ages. Fielder had all the time in the world to got under it, which he did. It did hit his palms and then popped out of his palms. Poor piece of fielding. Man who's standing at the mid-on. Now Khurram has the strike. Khurram did throw his bat at that one as it was outside the off stump. Didn't make any contact and it went through to the keeper. Very well bowled by Hasnain. Spectators have come to the ground and they're watching this match with keen interest. This is the KPL edition 2, KTPL in fact, Karachi Tray Ball Premier League.
Danish Khan is the owner of DHA Debunks. They've got Yunus Khan as their mentor. And this is going, and it is going a long way. Over to the leg side. I think it dropped onto the Moin Khan stand's roof. What a terrific six. 𝐒𝐞𝐫𝐿 is a dangerous customer, and he can do the damage and can do it quickly. There you see it again. It pitched on the middle and leg. All he had to do to put that away, which he did quite beautifully. There you see it again. Over mid-wicket she went. And in the meantime, Farooq Riaz has joined me. Farooq, welcome. Thank you very much, Rana Shwak. 𝐒𝐞𝐫𝐿 got off the mark with the maximum. It was a classy shot, a wristy work. He almost targeted the screen and stalled here towards the onside. Goes again. This is going in the same direction. And once again, it has gone over mid-wicket for a six. Back-to-back sixes and spoiled the over from Hasnain because he gave away only 3 in first 4 and then went for 12 in next 2. That is even classier, even bigger from King of Asia, 𝐒𝐞𝐫𝐿. I think he smashed the screen or maybe very close to it. Land ball, plenty of wrist work from 𝐒𝐞𝐫𝐿. Superbly timed. So entertainment has begun. 15 for none. Hasnain went for 15 in his first. Let's see who will start the second over from the far end from us. Although Kadir is the one who's starting the second over. Kadir Kashmiri. He must be from Kashmir. He's in. Down the leg side. Wicketkeeper did not able to take that one. So did the fine leg. And in the meantime, batsman crossed over, and it should be called wide as well. So 3 very valuable runs and very costly runs for the fielding side. Yeah, 3 runs given away as a result of fumble and wide. And 𝐒𝐞𝐫𝐿 is back on a strike. He smashed a couple of sixes, so certainly the confidence is high. The start was superb. This time he has given this a go. He had a real go at that one, and it's gone long way back over long on boundary. Both batsmen now showing what's they made of. What a terrific batting. This is tremendous from 𝐒𝐞𝐫𝐿. It was a length ball outside the off stump, and look at that. Beautifully played. Outside the off stump, trying to hit that one through the onside or over to the leg side towards the mid wicket. But I think bowler did take off a little bit of pace that time around. Otherwise, that would have been connected as well. 𝐒𝐞𝐫𝐿 showing his guts. Already has hit 3 sixes and only 5 deliveries he has faced so far. Outside the off stump, good delivery. That one took off a little bit. Good bounce, good carry through to the wicket keeper. Back-to-back dot balls after conceding a 6. He got away with that. It was outside the off stump. And previously he bowled a slow one that had received 𝐒𝐞𝐫𝐿 as well. Little bit and the ball came back in a little bit sharply. That disallowed the batsman. He brought that one back in. But this time he has pulled him away and pulled him away with the power. Over mid-wicket, another 6. 4th 6 off the bat of. Two runs will be given in the form of wide though, but wicketkeeper did pretty well. Maybe Fahd also refused. He hasn't faced much deliveries. Just 4 balls he has faced, and obviously he wants to join the party. And
want some good connection. So lots of fans and a lot of supporters we have in this match. The cricket is back on this ground after a couple of days break. So Fahad once again on strike now. We've got a good crowd in. This one is pulled all along the ground. Fielder comes up from the long leg. And single is attained. So 𝐒𝐞𝐫 is back on strike, 28 of 9. Just 45 runs away they are to get the lead. So certainly bowling side is under pressure. There is a long on, long off, deep mid wicket, deep one leg, deep square leg, lots of protection. Very well bowled. Oh, umpire gave it a wide, and bowler was a little bit surprised, but umpire declared it a wide. Although I think that was a good delivery, but I think just missed the area where it should have been. What is he complaining for? 𝐒𝐞𝐫, maybe there is a tear on the ball, but umpire say it is all right, but still not happy. 𝐒𝐞𝐫. What's the review, I reckon? 𝐒𝐞𝐫 is not happy. He got that away. What a tremendous shot. Outside the off stump, off the front foot, punching it over to the leg side, and over covers it went. 6 more. Goodness gracious. It was imperious. Outside the off stump. And he got the weight, but look at that show. Oh, goodness me. And they cleared the stadium. It's a flat strike and beautifully played. Great extensions of the arms. This has been a terrific batting from 𝐒𝐞𝐫, 34 of 10. Single-handedly taking the game away from the opposition, although we are in the first innings though. This is another wide, couple of runs more. It's turning out to be a long over from Zishan. Clearly struggling. Just 3 balls have been registered. And what a shot he's just played, 𝐒𝐞𝐫, over extra cover outside the off stump. Run a number of shots we have seen towards the onside, but very rarely we see the shots like that towards the offside. And it is equally good on the offside. He's punishing the bowler in all parts of the ground. This is what 𝐒𝐞𝐫 is all about. This is what Taimur Mirza is all about. These are the big name from Punjab, and they're living up to the reputations. This is going down towards the fine leg boundary. Runs everywhere. Looking unstoppable, Farooq, and it's a no ball as well. Oh my goodness me. 5 runs and there will be a free hit as well. In fact, 6 runs, yeah. Nothing is going in the bowling side's favour. He's clearly struggling, Zishan. None for 19 and just 3 balls have been registered. And it was a full toss. No ball came in. Free hit as well. So 𝐒𝐞𝐫 will be over the moon, who's on 38 of 11. So free hit to 𝐒𝐞𝐫. He's looking unstoppable. He's really pulverizing the bowler at the moment. Tremendous piece of batting. 38 of 11 deliveries. He reached to the 38 in no time. Down the leg side, another wide. Very, very long over for the bowler. Already has gone for 21 and 3 deliveries still to be bowled. 8 times he's delivered and just 3 balls have been registered. Certainly he's feeling the pressure and someone should come to have a chat with him. Free hit stays. It was down the leg side. Just targeting around middle and leg stump, but he certainly struggled to get the line right. 𝐒𝐞𝐫 awaits for the free hit. Let's see what he comes up with this time around. Here we go again. Oh my, but runs. Fahad Mian Channu almost forced 𝐒𝐞𝐫 to get out of his crease, and wide call, so free hit will stay. And Fahad, I think, wanted the strike, Farooq. He wants to have some fun in the middle. He wants to smash the out of the park as well. Now finally got the strike back, and he also got a free hit. 6 wides have been bowled in this over, and you can see on your screen right under the Zishan. 2, then wide,
2 wide, 6 wide, 6 no ball, wide, wide. Oh my words. What is happening with Zishan? Goes! Fahad Mia Chanu goes downtown over deep backward square leg. It's 6 is rain here. Although we had a good rain for 2 days. Yesterday and day before yesterday. Finally, it's a legal ball and relief for the bowler. That is why Fahad wanted to strike back and just flicked it away. It was wide as well. Yeah, that would have been a wide. Had it not been connected with the bat, that would have been definite wide. There you see it again. But he shuffled across and then whipped it away over deep backward square leg for a 6. Bowler having his hands on his hips is absolutely in disappointment. He's in disarray, I can tell you that, Farooq. He should come round the wicket as a left arm seam bowler, so maybe the natural angle can work for him. Another thing, I haven't watched anyone come to the bowler. Nobody has reached him to talk him, to cool him down, to calm him down. He's going for the runs and going for plenty. Lots of runs being given by him. But I think I haven't seen anyone coming to the bowler and talking to him. This is a good one. This is a good one. Finally, he bowled a dot ball. Sigh of relief for the bowler. Such a long over, and they're just 18 runs away to equalize the score. And current run rate is mounting. It's 25.60. DHA Debunks is with Yunus Khan. North Nawab is with Shahid Afridi as mentors. And Ali Zafar, the popular singer of Pakistan, sang a song for DHA Debunks. He goes for the reverse. This is not a reverse sweep. This is a reverse heave to the leg side. One bounce down to the third man boundary for 4. Everything is happening here. Farooq. Incredible shot, reverse ramp, and the first time I saw the shot like that, but he played it to the perfection. So 3 overs gone, then long over, 68 for none, North Nawab. So it's a one-way traffic here in Asghar Shah Stadium. Time for the change in voices. Naseem Rajput and Tausif Ahmed are picking up the commentary. Thank you very much, Farooq, and welcome, Tausif bhai. जी नसीम भाई 2 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर देख रहे हैं और ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है. तौसीफ भाई, ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्थ नवाब और ये ड्रॉन की ज़बरदस्त कवरेज यहाँ पर असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में, और ओवरऑल जितनी भी कवरेज यहाँ से जा रही है, पूरी प्रोडक्शन टीम को 100 मार्क्स जाते हैं यहाँ. ज़बरदस्त किस्म का कवरेज यहाँ से, और बहुत ज़्यादा जितनी पजीराई मिली हमें मीडिया में, सोशल मीडिया में, तौसीफ भाई एज ए मैनेजमेंट के रुकन आपको भी बहुत ज़्यादा एक तक़वियत मिलती होगी. जी हाँ, बड़ी खुशी होती है. और वाकई देखें 2 दिन जो हमारे मिस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और वही जोश व खरोश है. और इंशाल्लाह जो मैच हमारे मिस हुए हैं उसके लिए भी कुछ पॉलिसी हम बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है. नॉर्थ नवाब्स बैट्समैन इज इन फुल फ्लो. एक और छक्का यहाँ पर. जबरदस्त बैटिंग अब तक दिखाई दी है नॉर्थ नवाब. शाहिद अफरीदीज नॉर्थ नवाब, कमाल की बैटिंग है दोनों बैट्समैन है. किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल जो इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हैं, और इस बार भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसे अब शानदार अंदाज से पुल किया इस बार. ओवर पिच गेंद और एक आउट होने का खतरा यहाँ खुर्रम चकवाल के. बहुत कीमती विकेट होगी और ये कैच भी ड्रॉप कर दिया. और ये तमाम फील्डर चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं. सेकंड मौका है कि जब खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया को मौका मिला इस इनिंग में. जी हाँ, काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, लेकिन फिजाइया जो है वो अभी ख़राब इसलिए नज़र आ रही है कि फील्डर ज़रूर गेंद के नीचे पहुंच जाते हैं मगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते.
चूंकि हवा चल रही है और फील्डर काफी नाराज हैं अपने दूसरे फील्डर पे। खुर्रम चकवाल जिन्होंने एक गेंद पहले अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की थी, यहाँ सिक्सर्स की हैट्रिक मुकम्मल की तौसीफ। जबरदस्त बैटिंग और इतने शॉट मारे हैं चकवाल ने कि मेरा ख्याल है गेंद भी चकवाल के करीब पहुंच चुकी होगी अगर आप फेंकना शुरू कर दें तो। और इस बार कॉटन बोल्ट का चांस था लेकिन बॉलर से थोड़ा सा ऊपर गेंद थी। खुर्रम चकवाल जबरदस्त बैटिंग। पिछले मैच में खुर्रम चकवाल परफॉर्म नहीं कर सके थे लेकिन इस मैच में उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें किंग ऑफ एशिया करार दिया जाता है। और ये शायकीन क्रिकेट जो बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 की नशरियात बल्कि ग्राउंड में आके देख रहे हैं। और आप सब लोगों के लिए दावत है कि असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम तशरीफ लाएं और इस तरह के मुकाबले देखें कि जिसे कहा जाता है क्रिकेट ऑफ सिक्सेस। इस बार फहद मियां चुन्नू का जबरदस्त छक्का। नसीम भाई अब अगर आप देखें तो 4 ओवर अभी हुए हैं और लीड पूरी हो चुकी है और 2 ओवर में अगर ये 30 से 35 या 40 रन की लीड ले जाते हैं जिस तरह के छक्के पड़ रहे हैं। ये देखिए एक शॉट जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी बड़े अच्छे टाइमिंग के साथ। और मैंने ये देखा है कि जहां अभी सिक्सर लगा है वो तो एक हवा की वजह से जा सकता है बट जो दूसरे एंड पे जो छक्के मारे हैं वो एक्सीलेंट। और मुझे हैरत हो रही है DHA जो है वो पहले फील्डिंग क्यों नहीं की उसने। बिल्कुल अब तक हमने जो टीमों ने ज्यादातर डिसीजंस लिए थे मुझे तो जो याद पड़ रहे मेरा ख्याल है तमाम के तमाम मैचेस में पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था लेकिन इस बार तौसीफ अहमद कुछ मुख्तलिफ माइंड के साथ DHA दबंग के कैप्टन मैदान में आए थे। उनकी जो हिकमत अमली थी उसमें अब तक तो इतने कामयाब दिखाई नहीं दिए क्योंकि ऑलरेडी 11 रन की लीड कंसीड कर चुके हैं और 2 ओवर अब भी बाकी हैं नॉर्थ नवाब शाहिद अफरीदी के। बिल्कुल नसीम भाई और मेरा ख्याल है कि शायद आपस में जब मशवरे होते हैं यकीनी तौर पे अपनी जगह है। 2 दिन की बारिश हुई है लेकिन पिच में ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा जो शायद ये सोचा हो कि कुछ पिच इस तरह की हो, गेंद रुक के आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो बैट्समैन को खेलने में। हमें तो कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और इस बार खुर्रम चकवाल का एक मरतबा फिर आउट होने का खतरा है और कोई कॉल नहीं की। ये अजीब सी एक चीज हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखते हैं कि जहां पर कभी फखर जमान टकरा जाते हैं कभी कोई और प्लेयर टकरा जाते हैं और ये चीज आप देखें कि कई मरतबा हुआ। यहाँ पर ये 3rd टाइम है कि कैच ड्रॉप हुआ। खुर्रम चकवाल ने जो है पैनिक फैलवा दी है दूसरी टीम को और तो ये देखें कॉल नहीं की। जी हाँ, मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ कॉल की कमी थी और तीनों एक जगह पे आके जमा हो गए और एंड ऑफ द डे तीनों ये सोच रहे थे कि तुम पकड़ रहे हो या मैं पकड़ रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा बट ये एक वाइट बॉल आई थिंक। जी हाँ आप देखें कि अगर देखा जाए और कॉल जिसकी आप बात कर रहे हैं ये मिड ऑफ यानी लॉन्ग ऑफ का जो फील्डर है उसका कैच था ये। और फिर बॉलर जब बैक होके भागते हैं तो उनको काफी मुश्किल होती है बट आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा आपने कॉल करनी चाहिए और उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप जोर से अगर चीखेंगे और बोलेंगे तो एक और उम्दा शॉट जोरदार हिट यहाँ पर खुर्रम चकवाल की। जब मौके देंगे तो फिर किंग ऑफ एशिया तो साबित करेंगे कि वाई ही इज किंग ऑफ एशिया। एक और जोरदार छक्का यहाँ खुर्रम चकवाल का। जी हाँ एक तरफा कर दिया उन्होंने इस इनिंग को तो और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो हैं काफी बॉलें बाकी हैं और एक ग्रेट प्लेयर की ये इस बार पॉइंट की जानिब जोरदार स्ट्रोक। ये देखना होगा फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई है या ये भी छक्का है। जी अंपायर ने अंपायर दे दिया है। जी हाँ और मेरा ख्याल है कि हम मिड विकेट की बात करते हैं यही एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है। आप देखें कि एक्स्ट्रा कवर में उसने जो है छक्का मारा है और हम कहते हैं कि ये मिड विकेट शायद मारते हैं। सेवेंटी 71 रन स्कोर कर लिए खुर्रम चकवाल ने और ये फहद मियां चुन्नू ये भी एक जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है। और पिछले मैच में फहद मियां चुन्नू ने उस वक्त जबरदस्त बैटिंग की थी कि जब खुर्रम चकवाल नहीं परफॉर्म कर सके थे। इस वक्त स्लोअर वन कादर कश्मीरी की जानिब से जो पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द बैटर बॉलर
एक नाम है कादर कश्मीरी का। और पिछले मैच में हमने देखा था क्लिफ्टन गाजी के खिलाफ जब कादर कश्मीरी पहले ही ओवर में तौसीफ अनफिट हो गए थे। अच्छा बॉल यॉर्क, बड़ी देर कर दी मेरा ख्याल है कि ये बॉलें करने में। और आप अगर देखें तो जो हम कहते रहते हैं कि इंटरनेशनल में भी कि बॉल्स और रन्स का फर्क होना चाहिए, तो ये खुर्रम चकवाल की 20 बॉलों में 71 रन्स। और ये देखेंगे वो बॉल्स हैं तौसीफ अहमद जो तैयार रहती हैं ग्राउंड में जाने के लिए। फोर्थ अंपायर की ये जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं और वो बॉल्स उनके पास होती हैं। जब भी फील्ड अंपायर को दरकार होता है, उनके साथ फैसल भी बैठे हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन है। बड़ा पुराना साथ है हमारा फैसल के साथ। जी हाँ, सारा इंतजाम जो हैं परफेक्ट हैं और जैसा कि आपने देखा कि बॉल्स भी तैयार हैं और सब कुछ तैयार है, तो उस लिहाज से हम देखें तो ये पिछले टूर्नामेंट से इम्प्रूवमेंट ही काफ़ी नज़र आई है। पिछले मैचों में कुछ लोगों ने बात की, बॉलें पे एतराज़ किया, कभी कुछ किया, लेकिन ठीक है, वो एतराज़ अपनी जगह था, बट आपने देखा कि हमारी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं। तौसीफ अहमद साहब, इस दफ़ा मेरी तैमूर मिर्ज़ा से बात हो रही थी जो बेस्ट बैट्समैन है। उन्होंने कहा ज़बरदस्त बॉल्स यूज़ हो रही हैं, कोई शिकायत नहीं है। उस वक्त कई सारे बड़े प्लेयर्स लास्ट ईयर मौजूद नहीं थे। और इस बार फिर खुर्रम चकवाल, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे लेके ऑन साइड की जाने मिड विकेट पर जबरदस्त छक्का। जी हाँ, जबरदस्त छक्का। और अब तो कहते हैं मैं भी मुंह बस सूख गया है कि इतने छक्के पड़ चुके हैं कि हमारे आवाज ही नहीं निकल। 1-2 रन के लिए तो आवाज निकल ही नहीं रही, चौके के लिए भी नहीं निकल रही, सिर्फ छक्के छक्के की बातें हो रही हैं। खुर्रम चकवाल 77 पर बैटिंग कर रहे हैं और इस बार इनसाइड एज लगा, अच्छी बॉल थी यहाँ हसनैन की। और अगर इन 4 गेंदों पर खुर्रम चकवाल 4 छक्के लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पहली सेंचुरी होगी। और खुर्रम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं कुछ बैद नहीं है तौसीफ अहमद। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो अपनी जगह है, नजर आ रहा है, बट अगर इन 4 बॉलों में छक्के लग गए तो उसके बाद आप जरा लीड देख लीजिएगा कि कहाँ चली जाती है। बहुत अच्छी बैटिंग है डीएचए दबंग की, परफॉर्म नहीं कर सकी लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस है उनके साथ। एक बड़ी टीम करार दी जा रही है इवेंट की। और इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, दौड़ के दूसरे रन के लिए दोनों बैट्समैनों ने जल्दी की, फील्डर ने थोड़ा फंबल किया। इस तरह 2 रन हासिल किए फाद मियां चुन्नू और खुर्रम चकवाल ने दौड़कर। और खुर्रम चकवाल नाउ ऑन 79 ऑन जस्ट 23। नसीम भाई देखिए, ये अपनी जगह है कि टीम जो है पहली जो खेली है वो इस वक्त प्रॉब्लम में है, बट ये 2 इनिंग के उससे आपको वापसी का भी मौका मिल सकता है। गो के लीड काफी ठीक ठाक हो गई है, बट ऐसा नहीं हुआ, लीड लेके भी टीमें जो हैं वो हार चुकी हैं। ये फॉर्मेट ही इसी तरह का है कि आपकी वापसी मुमकिन हो सकती है। अच्छी गेंद, स्लोअर वन किया था यहाँ पर, फुल टॉस जरूर थी। क्रेडिट गोज टू यकीनी तौर पे बदर एक्सपो ज़ुहैर साहब को कि उन्होंने ये मेला लगाया है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम होता है, और जो भी टीम चाहे उनका स्टाफ काम कर रहा हो या हम लोग कर रहे हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और बड़ी, और जब इस तरह के हालात हो जाएं कि बारिश 1-2 दिन हो जाए तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। और खुर्रम चकवाल 80 रन स्कोर कर चुके हैं 24 गेंदों पर, जो अब इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर हो गया है इस बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 का। इससे पहले 70 रन तैमूर मिर्जा ने 21 गेंदों पर स्कोर किए थे। और इस बार फाद मियां चुन्नू ऑन साइड की जानिब खेले और 1 रन हासिल किया। इस तरह अब लास्ट बॉल होगी शाहिद आफरीदीज नॉर्थ नवाब की फर्स्ट इनिंग की। पिछले ओवर से हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी बॉलिंग हुई है। गो के देर जरूर हो गई लेकिन वो खेल ही बहुत अच्छा रहे खुर्रम चकवाल। तो ये कहना चाहिए कि ये अभी जो 4-6 बॉलें की हैं बहुत ही अच्छी की हैं, जिसमें 1-1 रन बना है। तो उस लिहाज से हम समझते हैं थोड़ी देर जरूर हो गई, बट नेवर नो। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि 2 इनिंग में जो है वो वापसी के चांसेस हो जाते हैं। लास्ट बॉल खुर्रम चकवाल जो ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर। इस बार अच्छी गेंद
जबरदस्त हसनैन का ये ओवर रहा कि आखिरी ओवर के साथ इस बार रन आउट होने का चांस, और ये भी एफर्ट कुछ ठीक है, आउट करने में कामयाब हो गए, लेकिन ये एफर्ट जो विकेट कीपर की जानिब से थी वो खासी करीब पहुंच गए थे फहद मियां चुन्नू, जबकि खुर्रम चकवाल बिल्कुल दूर थे और बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। बहरहाल विकेट हासिल हुई, यहाँ पर एक विकेट जरूर हासिल कर ली, लेकिन वो खासी ताखीर के बाद, वो भी रन आउट की सूरत में, जब खुर्रम चकवाल ये दूसरा रन लेने के लिए दौड़े थे और विकेट कीपर उनसे तेज दौड़े, और इस तरह ये पहला नुकसान हुआ। लेकिन ये इनिंग की आखिरी बॉल पर था, एक बड़ी लीड नॉर्थ नवाब हासिल करने में कामयाब हो गए डीएचए दबंग के खिलाफ। वेरी वेल प्लेड बोथ द ओपनर्स। तौसीफ जी हाँ, जबरदस्त बैटिंग, और ये देखते हुए कि स्कोर इतना बुरा नहीं था, जाहिर है कि पहली इनिंग बहुत ही अच्छी गई थी और काफ़ी रन्स हुए थे, और जिस तरह कहा भी था उनके कप्तान ने कि हम 80 to 90 रन्स करेंगे। और ये स्कोर कार्ड 121 for 1। नॉर्थ नवाब अपनी पहली बारी में 81 रन 25 गेंदों पर। खुर्रम चकवाल किंग ऑफ एशिया जो आखिरी गेंद पर रन आउट हुए, और ये बेहतरीन स्कोर है अब तक, इंडिविजुअल स्कोर है, 21 रन स्कोर किए थे। फहद मियां चुन्नू ने बॉलिंग में कोई एक बॉलर भी विकेट हासिल नहीं कर सका, और इकॉनमी देखते हैं तो फिर जीशान और जवाद का इकॉनमी बहुत ज्यादा रहा, 30 और 25 रन अपने एक एक ओवर में उन्होंने दिए। अच्छी बॉलिंग कहीं ना कहीं हसनैन की, जिन्होंने 2 ओवर में 26 रन दिए। इस तरह जो वाहिद विकेट हासिल की यहाँ डीएचए दबंग ने, वो रन आउट की सूरत में थी, और वो आखिरी बॉल पर थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रन आउट होना हो, लेकिन जो कैचेस ड्रॉप किए तौसीफ, कहीं ना कहीं नुकसान अपना बहुत बड़ा किया है डीएचए दबंग ने। जी हाँ, जब एक ऐसे प्लेयर को आप चांस देंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो, और एक नहीं बल्कि 2-3 कैच उनके छोड़े हैं। और ये खुर्रम चकवाल बेहतरीन मूड में दिखाई दिए, ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट, गेंद बाउंड्री के बाहर, इस बार तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले, और इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब, सामने की जानिब हिट की थी। यहाँ पर खुर्रम चकवाल आते ही जबरदस्त मूड में दिखाई दिए, ये बाउंड्री लगाई थी उन्होंने। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब जोरदार छक्का खुर्रम चकवाल का, इस बार फ्लिक किया था टांगों से गेंद को, और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। फहद मियां चुन्नू का यहाँ रिवर्स स्वीप, तो ये रिवर्स स्वीप आपको टेप बॉल क्रिकेट में भी देखने को मिल रहे हैं। ऑन साइड की जानिब जबरदस्त हिट खुर्रम चकवाल की, और एक मरतबा फिर फहद मियां चुन्नू की जोरदार हिट, स्लोअर वन पे उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। यहाँ कादिर कश्मीरी को लगा छक्का खुर्रम चकवाल की जानिब से। इस बार जबरदस्त पॉइंट की जानिब स्ट्रोक खेला है यहाँ खुर्रम चकवाल ने, ये पुल करने में कामयाब, गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, जोरदार छक्का खुर्रम चकवाल का। ये ऑन साइड की जानिब लास्ट बॉल को फ्लिक किया था, और ये वाइड विकेट जो हासिल हुई थी रन आउट की सूरत में। खुर्रम चकवाल KTPL सीजन 2 के सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोरर बन गए, और ये 39 रन की लीड हासिल हो गई है यहाँ शाहिद आफरीदी की नॉर्थ नवाब को। यूनुस खान जिस तरह की फाइट करते हैं, क्या उनकी टीम डीएचए दबंग या बड़ी फाइट के मूड में आती है? एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन कर रहे हैं। फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दबंग और है नवाब, सबके दिल की है आवाज।
शाम चाहे सुबह शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा जग सारा तुझे संग झूमेगा जब बल्ला तेरा घूमेगा चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे ये खेल है जवां मर्दी का तू जीत को एक दिन चूमेगा खेलेंगे बार बार हम जीते या हारे फिर हम होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम So North Nawab got a good lead, and the batters are coming out from DHA Debunks to begin their second innings. So they are trailed by 39 runs here. So lots of pressure on both the batters. They just couldn't get going, but after that, in reply, North Nawab, 𝐒𝐞𝐫 and Fahad, they played a blinder, and there was lots of entertainment, especially in the second innings. So they have to bounce back well. They are still in the game though. And I must say welcome to KRC in the Combox once again. Thank you, Farooq Riaz. And this man is 𝐶𝐞𝐫 from Multan. He's a very dangerous batter. Wasn't good touch, but unluckily, it didn't execute well. He got a very good reputation. He hit sixes mostly. And he got a record that he has Zabi bird on the other side. The 𝐶𝐞𝐫 chased 37 in last over. He smashed 6 sixes, so certainly he didn't get any help from the extras. Yes, that was an extra as well. So Farhad Abdali from Mardan. He was very good in first innings. And here we go for the first delivery. Once again, a very good start. Let's see. He was looking at it's over shoulder and looking for the wide delivery. He didn't like it, 𝐶𝐞𝐫. He tried to hook it away, but it was extra bounce. It was a legitimate ball. I think the bowler Abdali is having a word with an umpire. I think it's a legal ball. It has been registered. Maybe he's asking for one of the over or not. But nevertheless, it's a decent start. It's a talented left arm seam bowler. He uses the height of the ball very well, and also the natural angle over the wicket. He uses it very well. Short of a catcher. Somebody wants this. It's a tough one. And he misses. He misses completely. Could be run out as well. 𝐶𝐞𝐫 seems to be inside the crease here, but I think the bowler initially wasn't happy as a result of a drop catch. But we have to wait for the run-out opportunity. I think the body language suggests the batsman has made it. Well. They have dropped the catch, but there was a direct hit. And umpire has referred towards third umpire. Let's see. Look at that. It was a direct hit, but I think comfortably in. So he is fine. First, he got the chance, dropped the catch. And second, it was a good throw. But I'm telling you that if you are giving him chance, it could be really dangerous. Really, really dangerous. He was well in 𝐶𝐞𝐫. He did everything right. He perfectly grounded his bat to complete the run. The good common sense stuff from 𝐶𝐞𝐫. Misses again. Outside the off stump. It's a dot ball again. He's trying to work towards the onside. He is frustrated second time. He missed that one opportunity. I think the natural angle from the left arm seamer going across the right hander with some pace, and that disallowed the batsman on that occasion once again. So a decent start from Farhad Abdali, none for two, and two men are as a boundary rider, one at deep mid wicket, and one I think slightly on the edge of at mid off rather. No timing, could be run out at the bowling end. Oh, gone! What a throw! That is superb. 𝐶𝐞𝐫 didn't survive on that occasion. He's not happy with the partner. It's a magnificent throw, and first wicket goes down. Well, look at the jubilation. Look at the smiles. Look at their celebration. And this guy is not happy at all. Well, 𝐶𝐞𝐫, he's in. Look at that. Extremely well. It was a direct hit. Miles away. Miles away. What a moment in the game. 𝐶𝐞𝐫 goes for two.
Arsalan Jamshed, Arsalan, Archie Butt, new man in. And so they got the DHA Debunks once again in danger. North Nawab, they started well, very well. They were good in the fielding. Early on, dropped the catch, but got an opportunity of run out, and now they're very good. It's high in the air, it's high, high. Someone is underneath there and dropped. Goodness me, unacceptable at all. Big roar again from Farhad Abdali. He's not happy with the drop catch. The second time the catch has been dropped. It was way up in the air. It's a pressure catch. High catches are never easy, especially under the floodlights. But should have been taken. The number of drop catches we have seen like that. That was half-pitch bowler. Look at that delivery, trying to hit that across the line. Top edge, then miles in the air, and a simple catch dropped. Look at that. Didn't make a contact, Asif. It should have taken. I don't think so that in tape ball cricket, this is half-pitch bowler, very good batter. But, you know, when you're in the fielding, you should be 100% perfect. A little bit extra pressure was there. Maybe he felt. Well bowled. That is beautifully bowled. What an over. Terrific stuff from Farhad Abdali. 3 for 1. Yes, guys. Well, Archie Butt, now all the eyes and all the hopes with the Archie Butt. He's a very genuine hitter of Certainly, they are still 36 runs away. Went for the big shot, and that's the connection he was looking for. A superb strike for the maximum. It's a good shot. It's a very good shot from Zabi Butt. Zabi Butt and Archie Butt. Look at that. Hit nicely and clean shot. Going over the mid-wicket for the maximum. It's a good start now from Zabi Butt. Big shot again. There's a man down there, but it doesn't matter. It's high and handsome. 2 in a row from Zabi. Well done, guy. Well done, Zabi Butt. This is the spirit required from you. And DHA Debunks looking forward to get these sexes on each delivery, on every delivery. Look at that shot once again, and this time he is targeting mid-wicket area. Goodbye. 2 different lengths, but the result is same. It was a tremendous blow from Zabi, but must have got a lot of confidence. Well, Zabi Butt and Archie Butt, both from Gujranwala, and got the reputation. You can see that the smiles there. And once again, it's going high, high. Looks now a little confident, now a little happy, of course, that this is the 4th delivery, 3 sixes. It's the 4th one. Is it the 4th one? Is it the 4th one? Yes! Another 6. Wow. Great batting. This is incredible stuff. Chota Vicky got out early. That was a big blow, but I think Zabi Butt smashed wonderfully there. He released all the pressure his side felt. And we saw great 6s towards the onside. Look at that, down on his knees and
He's certainly looking the ball well and making some serious contact. 24 runs off the over. Can he make 6 out of 6, Asif? It's $1 million question, but the way he's playing, yes, he could do. Yes, he could do. Fifth delivery. Here we go. Here we go. Yeah, this time. Change of pace. Change of pace. Now all the pressure once again on North Nawab. DHA Debunks coming back into the game. He missed out on that occasion and a relief for the bowler. And normally in table cricket, we see the players, they play across the line. And that was a pattern line. He could have struck straight, but no, the batsman tends to play across the line. And that contact, it was a pattern length. So he missed it altogether. A precious dot ball. Big shot again. And on the first bounce, the ball went over the fence. So boundary to finish the over. 28 runs off the over. Massive over for DHA Debunks. 31 for 1. Oh, look at the shot. Again, targeting mid-wicket area. One bounce over the rope. Little fans of DHA Debunks. They certainly enjoyed the last over. I want to go back to the run out of 𝐒𝐞𝐫. I just pointed out the way he grounded his bat on the first attempt. And when he got out, actually, he wasn't looking at the fielder. He wasn't looking at the man who threw the ball. And he was miles away. He was just jogging around. He didn't ground his bat. I think he should have scolded himself. Well, the good thing is that the Badar Expo presents Karachi Table Premier League. It's a family festival. Families are enjoying actually here. And honestly, the way Zabi Bud is playing, it's tremendous. Early on, 𝐒𝐞𝐻𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 was on fire. And now all eyes there, Archie and Zabi Bud. Just 8 runs away they are. And 24 legitimate balls are left in this innings. Confidence is high. Arsalan has just faced a solitary ball. Will be on strike now. Swing and a miss. Farah Abdali is still on song. What a talent this man is. Yes, as I said earlier, that he's from Mardan, from KPK. Hassan Raza is the mentor for 𝐒𝐞𝐻𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫, former test cricketer. And Stanning Shayan, his son, he was the part of Overseas Warriors in KPL. So I was talking about Archie Butt. Look at that. He is reciting something. Farhad Abdali on the other side. Mrs. Hassan Raza. It was a very good delivery. It was a very good delivery. He wasn't in the frame. He could have got run out, but the throw wasn't up to the mark. He came back after a couple of days there now, but this game has set some standard. We saw good run outs, good throws, some sitters being dropped, but tremendous blows as well. And at the moment, this little kid is having fun. Everyone is enjoying this contest, especially the hitting from Zabi Bud. This side is still not well positioned. They need a couple of big overs like the previous one here. 7 runs away they are. Yes, that's right. 7 runs still require. Zabi Bud, dangerous man there. It was a very good delivery, asking for the caught behind. Ball Premier League, that you would have to accept that if the umpire said not out, that's the not out actually. Oh. See the way he was spreading his arms. Everyone started to celebrate when the keeper completed the catch. But most important was the dot ball. Outstanding bowling figures, none for 3 in 1.5 overs. Big shot, grand shot. It's a flat 6. Superbly played this time. And it's the first 6 conceded by Farhad Abdali. It wasn't a bad ball, but a good swing of the bat right off the middle. Well, look at that shot.
It was right out the middle of the bat and traveling. Adjustment into the stands, and it was a huge six. It was a Moin Khan stand. 2 deliveries remaining now for Farhad Abdali. Again, very good bull shot. It's a huge six. This is terrific from Zabi, but the first one was he, where the second was a genuine hook shot. He dealt with the pace beautifully. It is turning out to be one of the most crucial innings in the competition. He attacked with the bouncer and could reply. Good batting by Zabi, but he is not out on 41, just on 10 deliveries. Arsalan still there without making any runs. And Farhad Abdali bowling a last delivery. It was again going and gone. Tremendous batting. So Zabi, but is on fire now. 3 overs completed, 50 for 1. And DHA now got 11 runs lead now. Terrific batting from Zabi, but he took on Farhad Abdali in style and played some tremendous shots. So the action continues. Time for the change in voices. Rana Ashwaq and Adar Mushtaq will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फर्रुख रियाज इनके आसिफ. 3 ओवरों के बाद 50 एक विकेट के नुकसान पर फैमिलीज मौजूद असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में. डगआउट इस वक्त DHA दबंग्स का. बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा बैटिंग इस इनिंग्स में, और अब 11 रन की बर्तरी उनको हासिल हो गई है. यानी 11 रन इनका एक तरह से स्कोर है इफेक्टिवली, क्योंकि 39 रन की लीड इन्होंने उतारी है. 3 ओवर्स बाकी हैं. इन 3 ओवर्स में तूफानी ताबड़तोड़ बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं. वेलकम नादरा. बहुत शुक्रिया राना अशफाक. एक बहुत ही खूबसूरत मुकाबला देखने को मिला है, जो कि DHA दबंग की जानिब से भरपूर उन्होंने जो स्ट्रोक्स लगाए, दिलकश खूबसूरत 11 रन की लीड हासिल किए हुए DHA दबंग्स वर्सेस नॉर्थ नवाब्स. खुर्रम रबाडा फार एंड की जानिब से गेंद करेंगे. विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक. चौथे ओवर की पहली गेंद. शॉट राइजिंग, थोड़ी सी पेस टेक ऑफ की, मगर वाइड बॉल के 2 कीमती रन. जी हाँ, पहली गेंद और इस पे वाइड मिल गया. इनफैक्ट 2 गेंदें करा चुके हैं खुर्रम रबादा. लग रहा है इस वक्त के DHA दबंग्स अपनी फुल फॉर्म में वापस आते हुए अपने लास्ट मैचेस से बहुत कुछ सीख कर इस मैच में दाखिल हुए हैं. जोरदार हिट लगाने गए फील्डर, कैच गिर गया एक बार फिर. फाइन लेग की पोजीशन पर बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे आकर गेंद में हाथ डाले थे और गेंद हाथों में आई भी, मगर उसके बाद गिर गई और बॉलर बड़े हैरान और परेशान. इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे कर जाती है समटाइम्स, और इसी तरह से आप देख सकते हैं नॉर्थ नवाब्स के फील्डर्स के साथ भी हुआ. बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट थर्डमैन थे उन्होंने बिल्कुल मूव नहीं किया और फाइन लेग तकरीबन शॉर्ट थर्डमैन की जानिब आ गए, जिसकी वजह से बहरहाल स्टिल ये कैच करना चाहिए था मगर कर नहीं पाए. वो थोड़ा सा हैरान कुन है क्योंकि ये पूरी जो है वो वाइड है, यानी जहां पे वाइड होती है इस गेंद के बाद. ओझा स्ट्रोक मिस टाइम्ड है. फील्डर नीचे कवर्स में और पॉइंट से कवर्स की जाने मूव करते हुए कैच किया. इस तरह अरसलान जो कि बिल्कुल भी पुरएतमाद या
इत्मीनान से नहीं खेल पा रहे थे, वो आउट होकर वापस। जी हाँ, अरसलान इस वक्त अच्छी बट की वापसी हुई है, डिपार्चर हुए हैं उनका, और आप देख सकते हैं फील्डर ने बिल्कुल स्टंप्स के पीछे, उनका बिल्कुल स्टंप्स के करीब, और हिट विकेट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत महारत है इसमें। अच्छा, मैं लास्ट ओवर में बात करें वाइड्स की, जब ये पंजाब में कहीं टेप बॉल खेलते हैं ज़्यादातर क्रिकेटर, तो वाइड बिल्कुल छोटी होती है, यानी ये बहुत ही छोटी बच्ची लेकिन बहुत अच्छा खेल रही हैं और फ्यूचर स्टार हो सकती हैं पाकिस्तान की, और इनके साथ इनकी साथी भी हैं। तो वहाँ सिर्फ एक स्टंप की फासले पे वाइड होती है, ज़रा सी बार ऑफ स्टंप के वाइड है, लेग स्टंप में से वैसे ही वाइड, यहाँ फुल वाइड है, यानी जो इंटरनेशनल लॉ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत वाइड्स की हैं जो कि हैरान कुन है। दानिश खान DHA दबंग्स के ऑनर, यूनुस खान इनके मेंटोर हैं, उनके साथ बैठे अली अदनान, और आप देख रहे हैं तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद जो कि असगर शाह स्टेडियम में मौजूद है, और ये ब्यूटीफुल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं जियो सुपर की स्क्रीन पर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल। मुकाबला जारी है इस वक्त नॉर्थ नवाब वर्सेस DHA दबंग्स KTPL सीजन 2 का। ज़ेबी बट सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को उम्मीद दिलाए हुए हैं एक अच्छे टारगेट की। ये गेंद लेग स्टंप पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से होती हुई तकरीबन लॉन्ग लेग पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर, एक और चौका, और इस बार उमर है बैट्समैन। ये देखें, लेग स्टंप पर फुल टॉस और बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया बाउंड्री से बाहर। बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की, ऑन साइड पे खेलने गए थे, एक लेग 22 का रन किसी भी तरह है, बहरहाल रन बहुत अहम है। एग्जैक्टली आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे तभी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि DHA दबंग के जो बैटर्स हैं वो बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि उमर ने बड़ा अच्छा चौका लगाया, और उससे पहले ज़ुहैब बट के क्या कहने, 66 रन 15 गेंदों पर भरपूर बैटिंग की है उन्होंने। नजीब उनको गेंद करेंगे जो कि उनके पहले ओवर की तीसरी बॉल है। ऊंचा शॉट, फील्डर हैं, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में, और कैच गिरा। कैच गिरने का सिलसिला तूल पकड़ा, रन आउट चांस, और लगता है यस, अंपायर ने तीसरे अंपायर की जानिब भी रेफर नहीं किया, और ज़ुहैब बट बड़े उदास, बड़े मायूस, अपना एक हाथ कमर पे रख लिया है, और फील्डिंग साइड बड़ी जुबिलेंट, और उमर जो हैं वो उनसे थोड़े नाराज हैं कि दूसरा रन शायद था नहीं, लेकिन ये बड़ा नुकसान नादरा हुआ है ज़ुहैब बट की सूरत में। जी हाँ, बिल्कुल। ज़ेबी बट ने इस वक्त 67 रन की इनिंग्स के लिए 15 गेंदों का सामना किया है, और जिस तरह से ये मोमेंटम पकड़े हुए थे, जिस तरह स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लग ये रहा था कि ये भी खुर्रम चकवाल के जो, ये देखें, रन आउट होके वापस पवेलियन की जानिब गामजन। ज़ेबी बट 67 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के शामिल हैं और एक चौका शामिल है। यासिर मुश्ताक टीम के कैप्टन विकेट पे पहुंचे हैं, और ज़ुहैब बट बदकिस्मत रहे, मैं समझता हूं कि जिस तरह से उनके बैट पे गेंद आ रही थी तो अपनी टीम के लिए बड़े कारआमद साबित हो सकते थे आने वाली 9-10 गेंदों पर। बहरहाल अब जिम्मेदारी कैप्टन यासिर पर और उमर पर है जो कि विकेट पे मौजूद हैं, और यासिर फेस कर रहे हैं। पहली गेंद ऑफ साइड में, खूबसूरत शॉट,
फील्डर साइड ऑन दौड़ते रहे कि कहीं डीप वाइड मिड ऑफ पे जाके गेंद को कैच कर लूंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं, छक्का। बेहतरीन छक्का इस वक्त यासिर मुश्ताक का, जो कि क़यादत कर रहे हैं इस डीएचए दबंग्स की। काफी दौड़ लगाई फील्डर ने, मगर आखिर में हार जैसे नहीं मान जाते, गिव इन कर देते हैं। उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ ऊपर हैं, ये ऊपर से जा रही बड़ा जोरदार छक्का। इस मरतबा ऑन साइड में फील्डर हैं स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, लेकिन ऑन द बाउंस उन्होंने गेंद को रोका। जी हाँ, थोड़े से फासले पे फील्डर मौजूद थे। इस ज़ेबी बट की जो सूरत में नुकसान हुआ है डीएचए दबंग्स का, तो जिस तरह से वो मुस्तकिल स्ट्रोक्स लगा रहे थे, लग ये रहा था कि आज जो 81 रन्स बनाए, जो टॉप स्कोरर रहे हैं इस टूर्नामेंट के सो फार, खुर्रम, उनको भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए सिर्फ एक रन आउट की सूरत में। लेग स्टंप से बाहर गेंद, फाइन लेग से लगकर गेंद थोड़ी और दूर गई, और इस दौरान बैट्समैनों ने एक रन भी दौड़ा और वाइड बॉल, तो 3 कीमती रन्स का इजाफा। ये वो एक शोबा है टेप बॉल के क्रिकेटर्स के लिए जिसपे बहुत काम करने की जरूरत, न सिर्फ इन खुद को बल्कि इनके जो मेंटोर्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं टीमों के साथ, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, हसन रजा, नवीद लतीफ और बड़े बड़े नाम, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी काम आता है यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रास कंसीड कर रहे हैं। ऊंचा शॉट यासिर का, मगर फील्डर और उन्होंने कैच किया। इस तरह एक और नुकसान। जी हाँ, कोई भी गलती नहीं की फील्डर ने, और यासिर मुश्ताक जो हैं वो इस वक्त आउट होके वापस जा रहे हैं। एक बड़ा नुकसान डीएचए दबंग्स को, कैप्टन का डिपार्चर। यहाँ यासिर ने एक बड़ा अच्छा छक्का जरूर लगाया। ये उनके आउट होने का मंजर, गेंद जरा पीछे गिरी थी, उसको वहीं से फ्रंट फुट से हिट किया। स्क्वायर लेग के फील्डर कुछ आगे आए, अपने आप पर काबू रखा और गेंद को कैच किया। इस तरह यासिर मुश्ताक की छोटी सी इनिंग्स मुकम्मल, 3 गेंदों पे 7 रन बनाकर वापस। मोहम्मद इनाम बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, और अब देखना यह है कि अपनी टीम को क्या इनाम देंगे। ये क्या 2-3 छक्कों की सूरत में कोई इनाम दे सकते हैं अपनी टीम को। 51 रन की बर्तरी है। छह गेंदें इस इनिंग्स की अब भी बाकी हैं, और देखना है कि कितने रन मजीद स्कोर कर पाएगी डीएचए दबंग्स की टीम। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। देख रहा था कि ये वाइड ही होगी, और जिस तरह के वाइड की भी बरसात है, जैसे छक्के चौकों की बरसात है इस टूर्नामेंट में, वाइड्स भी बहुत ज्यादा मिले हैं, जो कि कहीं पर नुकसानदेह हैं बॉलिंग साइड पर और बैटिंग साइड के लिए फायदेमंद। जैसे ही मैंने कहा ऑफ स्टंप से बाहर, आप मुस्कुराई तो मुझे अंदाजा हो गया कि अब वाइड बॉल हो गई। काफी वाइड हैं यकीनन, लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद विकेट कीपर के पास। अब मुझे सही तो मैं नहीं कह सकता कि मैं वसूख से कहूं, लेकिन मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज की टीम ने किसी मैच में 89 एक्स्ट्रास शायद दिए हैं, तो एक्स्ट्रास हो जाते हैं कभी कभार बहुत ज्यादा। ये ओपोनेंट पे प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से जो बॉलर है थोड़ा सा शेकी हो जाता है। या टाइम्स कुछ बॉलर्स की यकीनन लाइन और लेंथ जो है वो काबू नहीं रहती। एक और अच्छी गेंद,
खुर्रम रबाडा की चौथी गेंद दूसरे ओवर की कराने के लिए बॉलिंग के निशान पर तैयार खुर्रम रबाडा, सामना करेंगे एम इनाम। एक और अच्छी गेंद मगर मिड विकेट की जानिब खेल दिया। गेंद बिल्कुल घास के साथ साथ गई बाउंड्री पे, 1 रन मिला। तो अब तक ये बड़ा अच्छा ओवर नादरा रहा है। आखिरी ओवर में तवक्को ये थी कि 20-22 रन बैट्समैन जरूर बनाएंगे क्योंकि अभी भी 2 गेंदें 2 छक्के लग सकते हैं, मगर रबाडा ने इस ओवर में बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। जी हाँ, और इस फॉर्मेट का एक तो ये भी बेनिफिट है कि जो बैटर्स हैं वो मैक्सिमम अपने बैट्समैनों को ला सकते हैं ग्राउंड के अंदर। आप मैक्सिमम बैट्समैनों को यूटिलाइज कर सकते हैं और रन्स बना सकते हैं। खुर्रम रबाडा एज्ड कॉर्ड इन द सेकंड अटेम्प्ट। पहले गेंद उनके हाथ से निकली, हवा में उछली, मगर उन्होंने दूसरी कोशिश में गेंद को थाम लिया और इस तरह बड़ी अच्छी बॉलिंग रबाडा की और उन्हें रिवॉर्ड मिला अच्छी बॉलिंग करने का, जिसे कहते हैं अच्छी बॉलिंग करने का समर मिला और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ये हम देख सकते हैं आउटसाइड की ऑफ स्टंप गेंद, बल्ला थ्रो किया, एज हुआ, पहला अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में गेंद उनके हाथों में आकर थम गई और इस तरह एक और विकेट गिरी है DHA की। चौरानवे पे 4, 5.4 ओवर्स के बाद। हसन रजा एंड जावेद कदीर ग्राउंड में मौजूद हैं। फैसल अतर को भी देखा जा सकता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ये खिलाड़ी। जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रहा था कि इनकी जॉब भी काफ़ी टफ हो जाती है जब काफ़ी एक्स्ट्रास कंसीड कर रहे हैं बॉलर्स या कुछ बैट्समैन जो अच्छा नहीं खेल पा रहे। कहीं ना कहीं इनको अपना तजर्बा मुंतकिल करना होगा और बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा इन खिलाड़ियों के साथ। एक और बड़ी अच्छी गेंद रबाडा, इस ओवर में लगा कि उनका नाम सही रबाडा है और सिर्फ 1 रन इस गेंद पे भी बना जो कि लेग बाइज का है। इस तरह 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स के बाद स्कोर और लीड जो है एक और ऊंचा शॉट जो कि बाउंड्री से बाहर गिरा। एक और बड़ा खूबसूरत छक्का, 10 छक्के लगाए जोहेब भट्ट ने, मुकम्मल तौर पे उनका शो रहा। लेकिन उसके बाद ये एक और छक्का हम देख सकते हैं इस वक्त। ये स्क्वायर लेग की जानिब ऊंचा शॉट था, फील्डर ने बड़े अच्छे अंदाज में गेंद को कैच किया। इस तरह 57 रन का टारगेट जो है वो मिला है नॉर्थ नवाब्स की टीम को और इस वक्त फील्डिंग साइड मैदान में मौजूद है और कुछ हिकमत अमली वो वजह कर रहे हैं कि इन 57 रन को Fahad Miachunu, he is from Miachunu and he's a very good batter, tall and got good physique. Even in tape ball cricket, this is the 𝐒𝐞𝐻𝐭𝐞𝐦𝐻𝐿, people call him No mistake whatsoever at long on, and Hasnain has got the breakthrough. This is what I was telling you, that they got 2 fielders on the onside in deep mid wicket and the long on. 𝐒𝐞𝐻𝐭𝐞𝐦𝐻𝐿, a huge and massive blow for the North Nawabs. He's not happy. He is disappointed. Yes, look at that. And this time he was trying to hit that over mid wicket, but it went straight to the feeder on the long on. Well judged catch, and 𝐒𝐞𝐻𝐭𝐞𝐦𝐻𝐿 departs on duck.
Hafiz bowler. So North Nawab chasing 57, 5 for 1. Outstanding over from Hasnain. Conceded just 5 and picked up a crucial wicket of 𝐒𝐞𝐫. 𝐒𝐞𝐫 smashed 82 in the first innings and got out on note in the second innings. This is how the table cricket works for you. That's the nature of the game. But as far as Hasnain's first over is concerned, he was absolutely superb, right on the money. Very disciplined, he used the pace well, he used the bounce of the wicket very well, and now 𝐤𝐞𝐫 will share the new ball. 𝐤𝐞𝐫 Kashmiri, he got injured in first match, and even before the match in Super, he was discussing about his injury, and he was not, of course he was not happy. Today he's feeling well, all okay. If he's coming up with his full pace, if is he coming with his full temperament, but this time it's towards mid-wicket, straight to the fielder. He's coming with his full confidence. I'm telling you that he's very dangerous. He got the good reputation. He goes all over the Pakistan, plays all the tape ball cricket tournament. It's a very good prospect. The target is not very high. The batsmen still are trying hard to go after the ball for the big shots. They have the gaps available. They can go for the ground shots as well. Well bowled, that is superb. Missed out by Hafiz bowler. That is quite special. Farooq, it could have gone straight away, LBW. It was a very good delivery. Swung in, and this is his speciality actually. He was right in front of the stumps. Plumb leg before. Do I go for the appeal from the commentary box straight away? We can file the appeal later on. Fahad Miachenu, the required run rate is 10.71. Again, very good delivery. This is what I'm telling you. Do not take him easy, dear. It's turning out to be another top-class over. Just 8 runs on the board and no extras given, I reckon. None for 2 for 𝐤𝐶𝐫, and Hasnain was also brilliant in his first over. Just 2 men are in the boundary rider there. Then after that, field restrictions will be lifted. 49 runs away. Big shot. Has it bowled him? It's a hit wicket, I reckon. We have to confirm. I think it's a hit wicket. And they are celebrating DHA Debunks. Hafiz bowler is stunned, absolutely stunned. Is slowly walking off. And the action replay will confirm it, Asif. What happened? Well, that's right. Well, that's right. Fahad Miachenu arguing with his partner. And it's high. It's a fielder underneath, but it's going out of the park for the maximum. First maximum of the run chase, the 4th innings of the match. Yahya off the mark. The ball landed just beyond the boundary. Once again, wasn't a bad ball. There's a good flick of the wrist, but wasn't entirely convincing. It went miles in the air. It's good camera work. It chased it completely, and finally it landed beyond the rope. 2 overs gone, 14 for 2.
14 for 2. Finally, they got one much-needed maximum. The Fahad is on his back on the strike. Yeah, he has smashed the maximum here, the flick of the wrist. And now they can take a breather as well. Field restrictions has been lifted. And straight away, you can see the boundary riders have taken their positions. Now you can see that 43 runs required from 4 overs. The required run rate is 10.75. Two important batters are back into the dugout. Khurram Chikwal and Hafiz Pola. Fahad Miachunu, a danger man still there. Oh, it was a very good delivery and asking for the out. And yes, up goes the finger. Another loss. And I'm telling you that DHA Debunks are very much back into the game. Non-strikers batsman Yaya cannot believe it because it is off the bat or maybe off the thigh, but umpire straight away gave him out. Fahad Mia Chinnu is asking his partner. He's entirely not convinced, but it's not giving any reaction. Maybe he has nicked it. Maybe he wants to take a chance with the review. So I think umpire heard something, some woody sound, and that's why umpire went for it. It was a high full toss, Kasif. Well, it was a legal delivery and batter has no clue. Yasir Mushtaq, the captain, taken an easy catch. Well, it was a tough call, isn't it? But I think he didn't give any reaction. I think he knows better than anyone else. He's walking back 3 of 5. Could you believe it that this is called when you're playing 2 innings match? Anything could happen. Certainly, that's the beauty of this format. Team always has a chance to bounce back. The spectacular bird view of Asghar Shah Stadium, North Nazabad. And the first match of the day, and it's turning out to be a cliffhanger, Asif. A low-scoring thriller, possibly. Yes, I'm telling you, it is turning out to be an interesting contest. DHA Debunks, the good thing is that they are not ready to give up. New batter in now. Mursaleen lefty. And his partner having word with him. Of course, that they require a simple effort. But things are getting very dangerous for North Nawab. They are in slight trouble. They are just one good over away. North Nawab, the right and left hand combination. Mursaleen. Hasnan, who was superb in his first over and started magnificently in his second over as well. The ball after every ball whenever they fail to make a good contact. But nevertheless, it is turning out to be a good finish here. 40 runs they are away and they need 19 legal deliveries now. Well, last delivery of the over. So far conceded only 3 runs and a wicket. What a bowling effort. What a bowling effort. And this is called your game awareness actually. You're coming up, you understand that we do not have a big total on the scoreboard. We just come up with good deliveries, with slow deliveries, change of the pace, and just try to restrict the batter. And so far they have got the success. Of course, they can rely on singles because the target is not high. They can play conventional cricket like we see in hardball cricket. The boundary riders are right at the edge of the boundary. The 1s and 2s are on. What was that? See, actually, he missed up his run-up
And there was a slight call, no? Or was that? I didn't hear. Maybe he was intelligent enough, so using his intelligence in every sense now, even before, measuring his run-up. Well, so last delivery still remaining. As he heard it's a no-ball delivery, he didn't deliver the ball. It turned out to be a dead ball. So last ball of over number 3. Yai on strike. 7 of 3 deliveries. Very good over so far from Hasnan, and down the leg side this time. And this extra could be really dangerous for DHA Debunks. 3 more runs added into the total now. Muzammil Kamuki, Terry Pindi, and Abdali. All of them, they're really good players of tape ball cricket. 37 runs away they are. They dominated the first inning the way they batted and hit in different corners of the ground. And now three overs have been bowled, 20 for 3. Northern Nawabs, they are struggling in this innings, quite surprisingly. They need 37 runs to win this game. And now time for the change in voices. To take you till the last ball of the match is Rana Shwaq and Nadra Mushtaq. बहुत शुक्रिया फर्रुख और आसिफ. ज़बरदस्त मुकाबला और डीएचए दबंग्स ने क्या ज़बरदस्त कमबैक की है. 39 रन की लीड कंसीड करने के बाद फिर 56 रन उन्होंने ऊपर किए और 57 का टारगेट दिया और सिर्फ 20 रन बनने दिए हैं 3 ओवर्स में और 3 खिलाड़ी भी आउट किए हैं. एक ज़बरदस्त मुकाबला, शायद अब तक के होने वाले मैचेस में से सबसे, जिसे कहना चाहिए कि ये ज़बरदस्त मुकाबला है जो कि नेक टू नेक जा रहा है. चौथे ओवर का आगाज. पहली गेंद, ऊंचा शॉट, मिसक्यूड. फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ से. गेंद को कैच करने की पोजीशन में एक और कैच. डीएचए दबंग्स की दबंग्स कारकर्दगी. वेलकम नादरा. बहुत शुक्रिया राना शवाक साहब. और इस वक्त आपने देखा कि क्या जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं डीएचए दबंग्स. जिस तरह हमने कहा था कि इनकी फील्डिंग भी देखनी है और उन्होंने पिछली फील्डिंग कम से कम बहुत अच्छी की थी और इस तरह से नॉर्थ नवाब को एक और खसारा हो गया है. बड़ा शॉट खेलने गए थे, बैट आगे गया, फील्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे. ये देखे फील्डर गेंद के नीचे आए और ऐसे स्वर्लर पकड़ना अंडर लाइट्स हमेशा मुश्किल रहता है, मगर बड़ी उम्दा फील्डिंग कारकर्दगी. एक और विकेट गिरी. 20 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हैं. 7 रन बनाए याया खान ने. मोइज ब्रावो बैटिंग करने के लिए आए हैं. डाइन ब्रावो या डैरन ब्रावो जैसी बैटिंग चाहिए इनकी टीम को. 17 गेंदें, 37 रन. नादरा, ये शो किया डीएचए के खिलाड़ियों ने कि टेप बॉल में भी टारगेट डिफेंड किए जा सकते हैं और इवन 56-57 रन के भी डिफेंड किए जा सकते हैं. अगर नहीं भी किए जा सकते, एटलीस्ट मैच तो उनमें से बनाया जा सकता है, जो कि उन्होंने बनाया अब तक. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा. और अब तक 3 ओवर्स में महज 1 छक्का और 1 चौका लग सका है. इससे आप कारकर्दगी का अंदाजा कर सकते हैं कि डीएचए दबंग्स कितनी दबंग अंदाज में इस वक्त परफॉर्म कर रही है और बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों के मेंटोर्स भी बहुत ही बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट में. बिलाशुबा डीएचए के साथ जोनस खान है और शाहिद आफरीदी नॉर्थ नवाब्स के साथ हैं और ये बदर एक्सपो केटीपीएल सीजन 2 अपने पूरे जोशो वलवले के साथ जो है वो जारी है.
पिछले 2 दिन गैप रहा बारिश के सबब, लेकिन आज पहला ही मुकाबला बड़ा कड़ाकेदार। इस गेंद को हिट किया, हिट बैक, और गेंद लॉन्ग ऑन पोजीशन पर, बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। 4 रन्स की एक बड़ी हिट। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले भी बॉलर्स जो हैं डेफिनेटली बॉलिंग अपनी पूरी भरपूर एनर्जी के साथ करवा रहे थे, लेकिन इस तरह के विकेट्स और रनआउट्स कम हो रहे थे। अगली गेंद, और इस मरतबा गेंद को ऑन साइड में खेले। मिड ऑन के फील्डर वाइड मिड विकेट की जानिब गए, 1 रन तक महदूद किया। एक और अच्छी बॉल। 13 गेंदें, 30 रन बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर डीके खान को हम देख सकते हैं कि अब वो कुछ राहत में महसूस हो रहे हैं, मगर बहुत ही टेंस माहौल है और जबरदस्त क्रिकेट खेली जा रही है। नादरा जी बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही टेंस्ड माहौल है। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा उस तरह से इनको प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है नॉर्थ नवाब्स को। और इस वक्त नॉर्थ नवाब अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाने की सूरत में इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं उनके 2 बल्लेबाज, लेकिन मुकाबला जो है वो डीएचए दबंग्स की जानिब ज्यादा लग रहा है। 13 गेंदें और 30 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की अगर वाइड या नो ना हुई, गेंद की एक और अच्छी गेंद। 1 से ज्यादा शायद ना ले पाए, हालांकि बैट्समैनों की ख्वाहिश है कि 2 रन लें, मगर एक ही के साथ उनको रुकना पड़ेगा। बड़ा शानदार ओवर कादिर का मुकम्मल हुआ। टेप बॉल में 56 डिफेंड करते हुए 2 ओवरों में 16 रन। जबरदस्त कारकर्दगी। 28 पे 4। बहुत ही जबरदस्त शॉट इस वक्त आप देख रहे हैं जियो सुपर की स्क्रीन पर। ये नॉर्थ नाजमाबाद का पूरा व्यू आपको नजर आ रहा है, एरियल व्यू। इस वक्त प्रोडक्शन टीम की बहुत ही महारत का मुंह बोलता सबूत है ये। रोशनियां, बरकी कुमकुमे, कराची शहर की शान। बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं कि कराची एक तारीखी शहर है, और जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ भी मैं समझता हूँ कि इस इलाके की भी एक अपनी तारीख है। और बहुत सारे क्रिकेटर इसी ग्राउंड से खेले, शुरू में यहीं से परवान चढ़े। और न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि हॉकी प्लेयर्स भी, वसीम फिरोज मुझे याद आते हैं। और फिर यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, मोइन खान, शाहिद आफरीदी, और इनके नाम से स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम स्ट्रीट्स की जब बात करते हैं जिनके नामों से मौसूम है, उसमें डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जिनका ये इस वक्त ग्राउंड जहां पर ये इवेंट हो रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे सिंध के, तो उन्होंने ये तमाम के तमाम जो एक एक लेन है उनको एक एक प्लेयर के नाम से मौसूम करवाया था, रजिस्टर्ड करवाया था। उनको क्रेडिट जाता है। और असगर स्टेडियम में जो मैचेस आप देखते हैं बराह रास्त जियो सुपर की स्क्रीन पे, आज भी आप देख रहे हैं KTPL सीजन 2 के मैचेस, इसकी भी मरहून मिन्नत है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। बिलाशुबा क्रिकेट से बहुत ज़्यादा उनको मोहब्बत थी और कमेंट्री को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे और ख़ुद भी कमेंट्री करते थे। रेडियो टेलीविज़न दोनों के लिए उन्होंने काफ़ी कमेंट्री भी की। 5वें ओवर का आगाज। मोहम्मद इनाम 12 गेंदें 29 रन। कमेंट्री एंड की जानिब से गेंद करने के लिए तैयार, और उनके सामने हैं राइट हैंडेड बैट्समैन। गेंद की ऊंचा शॉट, मिसक्यूड, फील्डर पहुंच तो नहीं पाए गेंद तक, लेकिन ऑन द बाउंस गेंद को गैदर किया। थ्रो जो कि वीकर 1 है। ये थ्रो अच्छा नहीं था, और वही विकेट कीपर कह रहे हैं जरा पहले आओ, यहां 1 रन होना चाहिए था, वहां 2 कीमती रन। बिल्कुल राना, मैं इसी बात की तरफ आना चाहती थी कि ये आप ओवर थ्रो जब कर देते हैं, ओवर थ्रो जब गेंद होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत ही देखभाल के करना है। गो के गेंद थोड़ा सा दूर किया था फील्डर के, 1 ही रन का इजाफा हो पाता, लेकिन यहाँ पर 2 रन उन्होंने बनाए हैं नॉर्थ नवाब्स ने। 11 गेंदें 27 रन। डीके खान, दानिश खान, DHA दबंग के ऑनर खुश तो लग रहे हैं, लेकिन
यकीनन जहन के अंदर और दिल के अंदर धक धक भी हो रही होगी, कहीं एक चौका छक्का दोबारा से उनको पीछे ले जा सकता है। 11 गेंदें 27 रन, टेंस बैटल गोइंग ऑन। दोनों टीमें अपने आप को अब भी मैच में महसूस कर सकती हैं। इनाम ऑफ स्टंप से बाहर, ये खतरनाक है फील्डिंग साइड के लिए। 2 रन भी मिलेंगे और बॉल भी दोबारा करनी होगी। 11 गेंदें 25 रन, व्हाट अ मैच, जबरदस्त मुकाबला। अभी भी कोई भी टीम जीत सकती है। जी बिल्कुल, और दोनों में से जो भी जीतेगा उसके पहले ही फतह होगी। 25 रन दरकार हैं इस वक्त नॉर्थ नवाब्स को जीत के लिए। और क्यूट सी बेबी आप देख रहे हैं दानिश खान की, जो उनके साथ दे रही है अपने फादर का, और अपनी टीम की किट में वो मलबूस है। जबरदस्त एटमॉस्फेयर, लाइटनिंग एटमॉस्फेयर। असगर अली शाह में पुल किया, लॉन्ग लेग की जाने फील्डर दौड़े, ओ अच्छी फील्डिंग और उनका थ्रो भी सिर्फ 1 रन तक महदूद किया। गेंदें कम, 10 गेंदें 24 रन। जी हाँ, जूं डॉट बॉल्स खिलाते जाएंगे डीएचए दबंग्स, वो उनके जीत में जो है वो नजदीकी आती जाएगी। फील्डर ने बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया, जिस तरह से उन्होंने गेंद रोकी। समटाइम ये पैर से जब गेंद रोकते हैं ये बड़ा डेंजरस भी हो जाता है, एंकल ट्विस्ट होने का भी खदशा होता है। बिल्कुल नादरा, आपका एंकल अगर बॉल पे आ जाए फुट तो फिर तो बहुत ही खतरनाक है। 10 गेंदें 24 रन, लेफ्ट हैंडेड ब्रावो स्ट्राइक पर। मुरसलीन 7 रन पे, इनफैक्ट मोइज 4 रन पर नॉट आउट हैं। मोहम्मद इनाम 5 रन अब तक दिए हैं। विकेट कीपर फील्डर्स को कुछ एडजस्ट कर रहे हैं और अब विकेट कीपर कुछ ऊपर आ गए हैं, ये हम देख सकते हैं। और अभी भी विकेट कीपर ऑन साइड के फील्डर से मुतमिन नहीं थे और उन्होंने, क्योंकि ये टीम के कैप्टन भी हैं यासिर मुश्ताक, अब अपनी विकेट कीपिंग पोजीशन पे वापस। दाएं बाएं उनके 2 फील्डर मौजूद हैं, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग। राज नजर आ रहे हैं, विकेट गंवा बैठे हैं। रन आउट की सूरत में कोई भी अपना खाता नहीं खोल सके थे और वापस पवेलियन की जानिब गामजन। सदफ एक गेंद का सामना किया और उस पे भी कोई रन नहीं बन पाया। ये देखें, इन्होंने खेला ऑन साइड में, विकेट कीपर ने गेंद को पिक किया, उसके बाद उनके पास बड़ा मौका था, उन्होंने थ्रो दिया क्योंकि बिल्कुल मिडिल में जाके खड़े हो गए सदफ। और मुरसलीन ने कहा कि बेहतरी है कि मैं स्ट्राइक लूं, और ये सिर्फ एक गेंद के मेहमान साबित हुए, 0 पे आउट। जी बिल्कुल, जिस तरह सदफ अब्बास बिल्कुल विकेट के सेंटर में आके खड़े हो गए और वहां पर मौका था कि आप आराम के साथ, बिल्कुल आपने देखा कि फील्डर ने किस आराम के साथ जो है वो विकेट्स के ऊपर बेल्स को टच की बॉल और आराम से उनको आउट कर दिया। वो अपने असल में असाब पे कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे। फरहाद अब्दाली नए आने वाले बल्लेबाज नॉर्थ नवाब्स के। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़े नर्वस हो गए। और अब ये दोनों चीज़ें हैं, या तो मुरसलीन का फैसला ठीक है, अगर ठीक है तो उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा ये रन्स बना के, वरना ये कि सिंगल लेते वो अगर ये मैच नहीं जितवा दे तो सदफ बाहर ज़रूर कहेंगे कि यार मैच भी तो जितवा सकता था। लेकिन एट टाइम्स ये करना भी पड़ता है, जो बैट्समैन महसूस कर रहा हो कि मैं देर से विकेट पे मौजूद हूँ और अब जाहिर है कि स्ट्रोक्स चाहिए, या सदफ की एबिलिटी पे उन्हें इतना यकीन नहीं था। बट व्हाटएवर, एक तरह से क्लूजन तो हुआ है, आपस में कुछ कहा सुनी तो हुई है और सदफ काफी मायूस होकर गए। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट भी देखना पड़ेगा, जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है, 18.00 पे जा पहुंचा है। तो ये तमाम चीजें भी बहुत ज्यादा उनको नजर में रखनी है। अब सिर्फ 6 गेंदें हैं, 18 रन दरकार हैं नॉर्थ नवाब को जीत के लिए। क्या नॉर्थ नवाब कुछ कर पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। इनाम की बॉलिंग भी इसमें बहुत ज्यादा, 3 छक्के किसी भी वक्त लग सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदों पर टेप बॉल में हमने 33 रन के ओवर देखे हैं, 27 रन के ओवर देखे हैं। और जिस तरह मुरसलीन ने स्ट्राइक जो है वो अपने पास रखना चाहिए आखिरी ओवर में, यकीनन उनके अज़ाइम तो यही होंगे कि वो अपनी टीम को जितवाएं। देखते हैं, बहरहाल इस वक्त बाएं हाथ के बैट्समैन मुरसलीन स्ट्राइक पर, जीशान
पे जिम्मेदारी आखिरी ओवर करने की। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड फाइन लेग। ये वो फील्डर हैं जो बाउंड्री राइडर्स हैं। छठे और आखिरी ओवर का आगाज और पहली गेंद, इट्स गॉन। छक्का होगा ये एक्स्ट्रा कवर्स पर मुझे लगता है। जी हां, ये क्रिकेट है, सच लेवलर। 5 गेंदें 12 रन। नादरा मैच दोबारा दोनों तरफ। एग्जैक्टली और इस वक्त इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो गया है कि दानिश खान के चेहरे से उन्होंने मुस्कुराहट भी छीन ली है। अगर 2 छक्के इस वक्त लग जाते हैं तो सोचे नॉर्थ नवाब जो है वो इस वक्त फतह का ताज अपने सर पे सजा लेगी, जबकि डीएचए दबंग जो कि तमाम तर मेहनत के बावजूद हार सकती है। जी हाँ, यही क्रिकेट है। 1 विकेट इन 1 ओवर एंड इवन 1 बॉल एट टाइम्स। एक बॉल पे, नो बॉल पे 8 रन भी बन सकते हैं, फिर फ्री हिट पे छक्का लगे 14 बन सकते हैं। ये क्रिकेट है, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट बाय चांस। अच्छा, दूसरी बॉल आखिरी ओवर की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बचे क्योंकि अंपायर ने वाइड करार नहीं दिया। और कुछ खुशी की लहर डीएचए दबंग्स के खिलाड़ियों में और सपोर्टर्स में। 4 गेंदें 12 रन, but 2 sixes स्टिल कैन डू इट। एब्सोल्युटली यू आर राइट। अभी भी इनको डॉट बॉल्स खिलानी है। अगर जीतना है तो यकीनी तौर पर गेंदें जाया अगर होंगी तभी आप जीत सकते हैं। डीएचए दबंग्स नॉर्थ नवाब्स बैटिंग साइड पर। थर्ड बॉल कमिंग अप ऑफ द फाइनल ओवर। एक और बड़ी अच्छी गेंद, He got him, yes! बड़ी जबरदस्त बॉल और जिशान विकेट लेने में कामयाब। और अब महसूस ये कर सकती है डीएचए दबंग्स के वो जीत के करीब हैं। हालांकि अभी भी 12 रन 3 गेंदों में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, लास्ट की 2 गेंदों तक आपके 2 सिक्सेस भी लग सकते हैं। नोबडी नोज कि अब क्या होने वाला है। नवाब आलम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं डीएचए दबंग का साथ देते हुए। वापसी हो रही है इस वक्त मुरसलीन की, जिन्होंने सदफ को रन आउट करा दिया और इस गेंद को मारने गए थे। बैट का नीचे वाला हिस्सा जो है, बैट के अंडर वाले हिस्से से गेंद लगकर गई विकेट कीपर के पास और इस तरह ये आउट होकर वापस कुछ उम्मीदें इन्होंने दिलाई थी। पहली गेंद पे छक्का मार के 17 रन बनाकर वापस हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सभी खुश नजर आ रहे हैं। मैच बहुत ही जबरदस्त है। नजीब इस वक्त आने वाले नए बल्लेबाज नॉर्थ नवाब्स की जानिब से, जिनसे कैच भी ड्रॉप हुआ था। अली अदनान और दानिश खान एक मरतबा फिर फुल मूड में नजर आ रहे हैं। उनको अंदाजा हो रहा है कि अब 9 रन बाकी रह गए हैं और 1 गेंद बाकी रह गई है। और अगर नो बॉल या वाइड बॉल नहीं होती है तो छक्का लगने के बावजूद जीत जाएगी डीएचए दबंग्स। इट्स गोना बी अ ट्रेमेंडस विक्ट्री इफ दे कैन विन इट। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन्नतें करेंगे इनके खिलाड़ी और कैप्टन और सपोर्टर्स और खासतौर पे दानिश खान के भैया वाइड या नो ना करना, वाइड या नो ना करना। 2 रन है वाइड या नो के। आखिरी बॉल, हियर ही कम्स, और नहीं की उन्होंने वाइड या नो। और डीएचए दबंग्स की एक जबरदस्त फतह। एंड लुक एट देम चार्जिंग डाउन द ग्राउंड। उनके खिलाड़ी दौड़ते हुए ग्राउंड में आ रहे हैं कांग्रेचुलेट करने के लिए। 39 रन की लीड कंसीड करने के बाद नादरा आउटस्टैंडिंग विक्ट्री। नो डाउट आउटस्टैंडिंग विक्ट्री और बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होकर खेले थे जिस तरह से डीएचए दबंग्स। और 8 रन से इन्होंने फतह हासिल कर ली है। 8 रन, सोचें 2 चौकों की दूरी पे नॉर्थ नवाब्स हार गए। और बहुत ही जबरदस्त दिले नातवा ने मुकाबला तो बहुत खूब किया था। नॉर्थ नवाब्स वर्सेस डीएचए दबंग्स, दोनों टीमों ने कोई भी अपनी
है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये वादा। ले रब का नाम चाहे सुबह हो शाम, तेरा नाम हर जगह गूंजेगा, जग सारा तुझे संग झूमेगा, जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रे, ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे दस छक्के लगा के 67 रन 16 गेंदों पर। इंशाल्लाह अब खेलने आए हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी खेलने आए हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी गुड लक ज़ेबी बट, एंड थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, साद वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश साहब एक मरतबा फिर मुबारकबाद एंड हार्ड लक। ओवैस मीर साहब, लाला पूछेंगे खुद ही इन लोगों से, आप फिक्र ना करेंगे जो मैच लूज किया है यहाँ पर। एंड मुबशिर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही और सीधे चल रहे हैं हम पिच पर, जहाँ के आसिफ तैयार हैं आज के सेकंड मैच के लिए। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen. Once again, we are ready for the toss of the second match of this evening. I'm down here with two skippers. Skipper of Clifton Ghazi's Asad Shah. We do have with us captain of FB Fighters, Haris Ali, and match referee, former international cricketer Nomanullah. Asad Shah, the captain of Clifton Ghazi, will toss the coin. Head is the call. Head. और हारिस, आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? बैटिंग करूंगा। हारिस, आज बड़ा एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिला और मार के तू गेंद घुमा, ऐ दुनिया तेरी दीवानी, ए चल बल्ला बढ़, ते शुरू हो जा, ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो घर, सारा जमाना तुझ तक झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत यार। अब इनकी बारी है, पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे
बैटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान डरते हैं ना किसी से खेल की है ये जान और है चौधरी और है दबंग और है नवाब सबके दिल की है आवाज बल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ दिल में है जुर्रत दिल में है जज्बा मारेंगे मिलके हम सब ये वादा Welcome back to the Asghar Ali Shah Cricket Stadium, North Nazimabad, Karachi, and Clifton Ghazi taking on FB Fighters. Today's second match, and in total it is the match number 12th of the event. Taken without any mistake here. It went miles in the air, and just for a second we thought somehow it would travel all the way, but the fielder came along the ground and it traveled a lot in the end. Well judged catch. So Usman Jan came and went. 6 for 1. Newman coming out to bat. We've got a tremendous atmosphere. Haris Ali is the new batsman, who's captain as well. We've got tremendous atmosphere downstairs. A lot of music is being and a very fine character as well. He debuted in Faisalabad. Outside the off stump a little bit. Then he played Sahara Cup as well, and in Sahara Cup one of the matches he got a 50, I remember. And Pakistan had a very good side in those days. But I always admire or appreciate Hassan Raza that he played with giants of the game, and he played well and sustained there. Tosif Bhai again. This one is smashed away over long off for a beautiful 6. Lovely shot to end the over, lofted over the boundary for 6. Over the wicket, left-arm bowler, pitched up and beautifully played. Exactly what I was talking about. Played straight through the line, and it looks so graceful. Nothing wrong with that. Lovely follow-through and good result in the end. Innocent baby with Tosif Ahmed, and she is his granddaughter.
maternal granddaughter, not paternal. Good to see. Good to see. It's a great transformation from generation to generation. Second over is beginning here. And it's caught behind. It's caught behind straight away. Bowler started with the wicket. Finally a breakthrough. It's a good catch by the keeper. Wide outside the off stump. And finally it's a consolation for the bowling side here after an expensive first over. Try to work towards the onside here. The left and fast ball, he's been so impressive. Extra bounce did the trick and very good take. A smart take indeed. It deserved a wicket. Extra bounce always have a value in any form of cricket. So Ubaid Lefty is on his way. It's 25 for 2 on the board, Federal Bay Fighters. A lot of families have come to watch this enthralling and entertaining event taking place here in North Nazimabad, Karachi. We've got a good spectators in the main pavilion. Another short pitch delivery. He's appealing for the caught behind, but umpire quite unmoved. He's a star cricketer for Exactly, Farooq. Because of the wind, bowler can take some advantage. And that's exactly what we saw in the previous match. Because bowler were getting a lot of assistance from the wind. That's why they're able to defend 56 runs in 6 overs. Outside the off-spin batsman threw his bat at that one. Wicket-keeper fumbled a bit and allowed them to go through for a bye. excellent over by Farman. Just 3 conceded, 29 for 2. Javed Khadir, a former international player, he always looks pretty serious. I wonder why. I hardly saw him smiling, Javed Khadir. And I always saw Faisal Adhar and Hassan smiling. And Javed Khadir doesn't smile. I don't know why. I think these two have to do something to make Javed Khadir smile. Please, Adhar and Hassan. Obviously, not many runs are coming from his side, especially the last over was economical one from Farman. He's a real star, Farman, and we will see him again in action. What's the prediction, Rana? How much will they get the total in the first innings? I reckon it can be around about 80-90 because they've still got 4 overs left, and Haris is a very good batsman. Tahiri has been brought on to the bowling attack. Down the leg side. They ran through for a single. It's wide as well. So 3 very, very valuable runs. But bowling team can restrict them to even 75-70. Yes, the way Farman bowled and the way rest of the bowlers, it depends how the rest of the bowlers deliver.
For the moment, as Hassan's got the strike, he will certainly target Tahiri. Certainly. Another wide, 2 runs. So he conceded 5 without a ball being bowled. It swung away. You may have noticed it was close to be a dot ball, but it swung away, and in the end was a wide delivery called by the umpire. Tahiri got a short run up to the wicket, and this time he has played that away and played that away in the gap. It has crossed the long off boundary for 4 runs. That's well played. Some consolation for the batsman. Some contact he has made, but outside the off stump, and somehow managed to block it, but perfectly placed. And after the bounce, the ball further turned away. Yeah, as we mentioned on and on, that wind is picking up in the ground. Another wide. Tahiri causing some trouble for himself and also his team. He is releasing the pressure, the pressure maintained by Farman. He is considered wides, and he has to be accurate in this over. And this could be held. Wicketkeeper has taken it quite easily. So Hassan was in all kinds of trouble, although Tahiri was helping him by giving some runs away, but Hassan didn't excel at all and goes to second wicket. Third wicket falls at the score of 40. Certainly a mistimed shot. He knew he would be in trouble straight away, and the keeper. ये गेंद बहुत दूर जाएगी. जी हाँ, फील्डर ने कोशिश जरूर की, लेकिन अगर वो स्पाइडरमैन होते, सुपरमैन होते तो ये गेंद रोक सकते थे. थैंक यू वेरी मच के आसिफ. बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट बदर एक्सपो टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 2 जोरों शोर से जारी. खूबसूरत शॉट खेला हारिस ने. बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला फ्रंट फुट पे आके मिड विकेट की तरफ. और इस दफा इसको जोरदार तरीके से पुल करना चाहते थे, और एक और दूसरा रन यहां पर बन जाएगा. यहां पर दूसरा रन बन जाएगा. सुस्ती की फील्डर ने और उसका भरपूर फायदा उठाया. ये डग आउट है एफबी फाइटर्स का. डग आउट एफबी फाइटर का. इंटरनेशनल प्लेयर जावेद कदीर बैटिंग मेंटोर इस टीम के, जो कि बैट्समैन को सजेशन देते हुए. हारिस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. 10 बॉल में 22 रन बना चुके हैं अब तक. प्रॉपर लेदर बॉल क्रिकेट शॉट्स खेल रहे हैं. एक और खूबसूरत शॉट पुल किया है मिडविकेट पे. यकीनन तीसरा छक्का है ये हारिस का, और छोटी शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी. खूबसूरत शॉट खेला. शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसका भरपूर फायदा उठाया हारिस ने. ये देखिए, भरपूर टाइमिंग, भरपूर कुव्वत, और गेंद पहुंचा दी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए. सो हारिस अब तक बेहतरीन बैटिंग करते हुए. बड़ा अच्छा शॉट खेला. ये एक बैट्समैन की निशानी होती है, क्योंकि हार्ड बॉल से भी खेलते रहे, ये डोमेस्टिक सीजन भी खेलते रहे. काफी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी हैं. अच्छी बैटिंग की उन्होंने सीजन में, मगर टेप बॉल में भी अपनी परफॉर्मेंस देते हुए, अच्छे शॉट्स खेलते हुए. अगेन फुल शॉट बॉल थी. 6 रन हासिल किए डीप स्क्वायर लेग पे.
बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। हारिस जो कि अब नॉट आउट हैं 34 पर 12 गेंदों का सामना किया है, बैक टू बैक छक्के लगाए हैं ये देखिए, और बल्ले के दरमियानी हिस्से को गेंद लगी और एक दफा फिर ये फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। सो हारिस अली इज ऑन फायर। थोड़ी सी बॉल से नजरें हटाइए मगर बॉम्ब्स हुआ है और उसको फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग पे। 12 बॉलों पे 34 रन बना चुके हैं अब तक हारिस। स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन बॉल को देखते हुए कि बॉल सॉफ्ट तो नहीं हो गई है कहीं, और अगला शॉट खेलने की तैयारी हो रही है हारिस की। और इस दफा इसको खेल दिया ओवर एक्स्ट्रा कवर, इट्स गोइंग आउट ऑफ द पार्क। जबरदस्त छक्का। सो अब इस ओवर में 4 छक्के लग चुके हैं। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा हारिस अली की जानिब से। बहुत अच्छा शॉट खेला है ये, और प्रॉपर मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास प्लेयर भी आ चुके हैं, क्रिकेटिंग शॉट खेला है। अमूमन जो है सारे शॉट लेग स्टंप पे होती है, मगर एक्स्ट्रा कवर पे बहुत आई ऑन द बॉल घुटना टेक के और ये अगेंस्ट द विंड खेला। बहुत खूबसूरत शॉट। यहाँ पर अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है कि प्रॉपर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जहां शॉट ऑफ लेंथ बॉल मिली वहां पुल किया। अपनी इनिंग्स में 4 छक्के लगा चुके हैं, 13 बॉलों पे 40 रन बना चुके हैं अब तक। एफबी फाइटर के मेन बैट्समैन और कैप्टन भी हैं, यकीनन जावेद के दिन आज इनको टिप्स दिए हैं बैटिंग के। आखिरी गेंद अब इस ओवर की। अब तक 28 रन फरमान दे चुके हैं और 26 रन बन चुके हैं। और यहां पर बोल्ड कर दिया। आई बेग यू पार्डन, ऐसा लगा था कि बोल्ड हो गए, लेकिन अंपायर ने, मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं जज्बाती हो गया था हसन। इतना जज्बाती ना हो, और लेग स्टंप से दूर थी ये बॉल थोड़ी सी। इसको भी स्क्वायर लेग पे जहां पर प्रीवियस 2 शॉट खेले थे हारिस ने, वो शॉट खेलने जा रहे थे, मगर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अब तक बॉलर की लाइन और लेंथ नजर नहीं आ रही। कुछ हाफ वाली बॉलें की हैं और कुछ लेग स्टंप पे शॉट ऑफ लेंथ बॉलें की हैं। 2 और 3 वाइड कर चुके हैं अब तक अपने ओवर में। बॉलिंग रनअप है, शॉर्ट रनअप है इनका बॉलर। आखिरी गेंद, और इस दफा रूम बनाकर खेलना चाहते थे हारिस अली, और ये एक डॉट डिलीवरी। इसके साथ ही ओवर का इख्तिताम हुआ है। चार ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और ये मैच आप देख रहे हैं लाइव फ्रॉम असगर शाह क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और इस वक्त करंट रन रेट 17.25। आज जो पहला मैच हुआ था उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और इसको क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे हसन। पहला मैच हमने देखा जिस तरह से DHA दबंग वापस आई मैच में। इस फॉर्मेट के ऊपर बात हो रही थी, लोग बात कर रहे थे कि मैच बड़ा है, फॉर्मेट लंबा है, लेकिन इससे साबित हुआ कि जिन टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जिन पाकिस्तानी लेजेंड्स ने ये फॉर्मेट तश्कील दिया था, उनका विजन बहुत ज़बरदस्त है। जी बहुत ज़बरदस्त विजन है उनका, स्पेशली जावेद मिंदास साहब, और इसमें शायद अफरीदी भी अब इंटर हो गए इस टूर्नामेंट में। एक और यॉर्कर बॉल थी, स्ट्रेट खेलना चाहते थे हारिस, मिस की। हारून रशीद साहब और तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये पाकिस्तान के शॉट खेलना चाहते थे। थोड़ी शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी और एक्स्ट्रा कवर पे कैच लिया। हवा में बॉल रही काफी देर तक।
फंबल भी हुई एक दफा फील्डर से, मगर कैचेस विन द मैचेस। और ऐसे बैट्समैन जो सेट बैट्समैन है, उनका कैच अगर आप छोड़ दें तो यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बॉलर्स को भी और टीम को भी। 19 गेंदों पे 46 रन बनाए उन्होंने, 46 रन। जावेद कदीर क्लैप करते हुए बैटिंग मेंटोर, इंटरनेशनल प्लेयर। नए आने वाले बैटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और एक तसव्वुर अब्बास और जबरदस्त हवा चल रही है आज कराची में 2 दिन की बारिश के बाद। आज मौसम बहुत खुशगवार है और टेप बॉल क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन मौसम है। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। अब तक 5 ओवर्स में 80 रन बनाए हैं 16 की औसत से। तसव्वुर सामना करने के लिए तैयार हैं और एक दफा फिर ऊंचा और एक और नुकसान। कोई गलती नहीं की इस दफा विकेट कीपर ने ये कैच थामने में। एक और नुकसान हुआ। तसव्वुर बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं, जल्दी आउट हो गए। जी हाँ, खतरनाक बैटिंग तो करते हैं, मगर पहले बॉल पे डायरेक्ट हिट लगाने गए। और जो कि टेप बॉल का कॉन्सेप्ट है कि तो आई कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फील्डर के लिए, जो कि फील्डर ने अपनी बॉल पे नजर रखी कंसिस्टेंट और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लिया। अगर नॉर्मली ये कैच बॉडी से नीचे लेते हैं तो ड्रॉप हो जाता है। 3 गेंदों पे 2 रन बनाए और पवेलियन में वापस बैट्समैन। 2 बैट्समैन कंटिन्यू 2 बॉलों पे आउट हो चुके हैं। खूबसूरत ग्राउंड, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की खिदमत पाकिस्तान की क्रिकेट में। एओ फ्री कोचिंग कैंप यहाँ पर लगाए गए। यहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ मैं बल्कि शाहिद आफरीदी और बड़े बड़े स्टार्स प्रोड्यूस हुए इस ग्राउंड से। गए थे कैच की ट्राई करने, तेज शॉट था। जिस तरह से 2 बॉलें बीट की, और यही फर्क होता है बैट्समैन में कि बैट्समैन टेप बॉल में जब आते हैं वो रोकते नहीं है बॉल को, और कुछ चेंज ऑफ पेस, कुछ वेरिएशन करनी पड़ती है बॉलिंग में आपको। उसका फायदा बॉलर्स को ही होता है। और 2 बॉलें बीट की। तीसरी बॉल जो है उन्होंने मिडिल स्टंप में की थी, रन आउट किया। क्रीज से दूर थे, अंपायर का इशारा आउट। बैक टू बैक तीसरी विकेट भी गिरी। अली शेर खान 3 बॉल में कोई रन नहीं बनाया, 2 बॉलें बीट हुई और तीसरी फेस की थी। तो हसन, अब आखिरी गेंद का खेल बाकी है और इस दफा इसको जोरदार तरीके से खेलें मिड विकेट की जानिब और दूसरा रन भी बन जाएगा। रन आउट होने का खतरा और रन आउट हो गए। तो दूसरा रन लेने की कोशिश में एक और नुकसान हो गया क्योंकि आखिरी गेंद थी। अच्छी कोशिश उनकी। इस तरह 81 रन बनाए। एफबी फाइटर्स ने यहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। कीपर ने कैच किया बड़ा अच्छा रनिंग करके, और ये फिर
The skipper of Clifton Ghazi is making his way with his colleague, and lots of fireworks are expected now. He is one of the tape ball sensation. Wherever he plays, he's a crowd puller. Recently, he won the match for his side a couple of months ago in one of the grounds of Karachi. He's a match winner, and in the comment box, once again, I have been joined by Rana Shwag. Rana, welcome back. Thank you, Farooq. Indeed, Asad is a match winner player, and he has Usama Ali alongside, who can do the damage as well. Asad Shah is a terrific hitter of the ball, and he can whack the bowler in every part of the ground. But on the other end, Ali Sher Khan will start the proceedings, and they've got to be very accurate as well. In first match, we saw DHA Debunks making a terrific comeback after conceding 39 runs lead. Not only scoring 95 in the second innings and defending 56 with great authority. They bowled with great venom and bite. Asad is on strike. Your speculation was around 80 to 90 runs for first inning total, and they got around 80, 81 is the exact score. So you are pretty much right as far as the speculation is concerned. You read the pitch well. I'm not a good reader of the pitch. In Urdu, I would say, tukka hi mara tha maine. Here he goes, Asghar Shah, straight away, first ball, maximum. That's how he plays. Beautifully balanced, nicely controlled, and it went over the fence. Shot, yeah. That was a great shot. Pick drop straight away. Let's have a look at this one again. It was on the leg and middle, and batsman swiveled around on his one leg and then just patched that for a long way. Easy pickings for Asghar Shah. He plays these kind of shots with authority. Oh, well bowled, swing and a miss. Change of line, change of length, and it turned out to be a dot ball. This is where he should be bowling most of the time. And you can have a man at gully or point as well to protect that stroke if it could be played. But that was a very good ball. Good bounce, good carry we saw. Here he goes again. Here is the maximum. Second six of the over. Length ball and nicely managed by Asghar Shah. What a start. Just bowled a very good ball. But on a very next ball, once again, he wavered. He heard his length and line. And that was on the card. If you bowl like this, you could be smashed like that. He does swing his body just to give extra impetus. And most of the players, the top players of tape ball, they like to play to the onside. But Asghar Shah not only relies on his wrist, but also he transfers the body weight well, and also he moves his body very well just to make sure the ball gets over the boundary. Wide on the leg side. One of the most destructive players. So he's got a start, a runner. Yes, he only can build up on it because he already has struck a couple of sixes and bowler helped him with a wide. So runs already have come in big numbers. Straight down the ground, hasn't got the timing right and gone. Well taken, he knows it, he mistimed it and picked the man to the perfection. So Asghar Shah has to go. What a big wicket. What a big wicket for the fielding side and big blow for the Clifton Ghazi. Asghar Shah all set for the big innings. Now he's walking back dejectedly because he got off to a good start. Then he gifted his wicket away. I would say he threw his wicket away. Look at that. Fielder was at mid-on, but he ran side-on to take that. And I think he took a very good catch. He goes for 12. Hassan Raza is in conversation with ground commentator Daud,
And Muzammil Kamoki has come out into the center for Clifton Ghazi. He's also a very attacking player. He showed his aggression in the early matches as well. They are 67 runs away from the score of FB Fighters, which they scored in first innings. Slower one, and he got Fox. Luckily, there was no man close to the stumps. Because he got himself in a bit of a tangle. I think that was a half-hearted shot. First he committed for the drive, then he blocked his bat, and that could have gone any way. And that could have been resulted in his wicket. Good comeback by Ali after conceding 2 maximum. Last ball of the over now. Just wide, I reckon, yes. Just wide outside the off stump. He has to reload. Spot on, Farooq. You judged it pretty well from here. That was a wide. This margin of error is not high, especially on the onside. In the air and safe. The outfield is a little heavy. Settle for 1, and Muzammil Kamoki will retain the strike. 17 for 1 after the end of first over. $17 for 1, Clifton Ghazi. They just lost a wicket off their skipper, Asghar Shah. He wanted to clear mid-on, and he's mistimed the shot, and in the end, he had to pay the price. He was caught safely at mid-on. Kamoki wasn't looked comfortable in last over. First he played a half-hearted stroke, and the last one wasn't a convincing one as well. Shafiqur Rahman going to start the second over from the far end, which is called Dr. Syed Imran Ali Shah Pavilion End. Oh, that should be a no ball. It's a beamer, I reckon, but well played by Kamoki. He didn't miss out. Kamoki did well to fend it down towards the long leg, but I think it slipped out of his hands, or deliberately he bowled that type of a delivery. Look at that. That was a real beamer, and had it been a hard ball, batsman could have been in trouble as well. I think if he bowls again, he can be removed from the bowling crease as per law. I think the law will remain the same here. Yeah, it should be. It should be. An umpire signals it is going to be a free hit, and Kamoki has the license now. Apart from the run out and the obstructing the field, he can't be dismissed. Smash down the ground, free hit, and it's got a maximum. Good clean strike by Kamoki. He made a good contact. Straight down the ground for the 6. So 4 followed by a maximum, and it was a free hit, so he had a license to free his bat. Kamoki doesn't spare those. Outside the off stump, not only it was a free hit, but also that was a bad ball. Width was there, and he smashed that one straight down the ground over long off for a 6. It was wide outside the off stump. It was a shorter ball, so Kamoki had the time to dispatch it. He played it straight and played with real command. Pressure on the bowler. Not cut of the middle. Pick the man. This is the over, and after this over, the field restrictions will be lifted. I want to talk about the beamer, the way he played the beamer. That reminds me how good hooker he is. It was a sharp beamer. He not only saved himself, but also has played it well for the boundary. Of course, it was climbing on him, and batsmen, I think, did well. Swing and a miss. Land ball, I think the bowler got away with that. Kamoki knows that he has missed the opportunity. And hook shot is one of the finest strokes of the cricket.
cover drive longer we always talk about, but I think hook shot is a very difficult shot and a good shot as well. Ejaz Ahmed was a good hooker of the ball in 90s. Oh, dropped. That could have been taken. Expensive miss. That is an expensive miss. He got surprised. He wasn't expecting, but you have to be alert here. He caught the hands. The fielder is not happy with himself. Just came in and came out. Yeah, that was a catch which was dropped by the fielder, and 𝐤𝐞𝐽 can make them pay, and can make them pay dearly, because he's a dangerous batsman and already got a life. Wide card of the middle. Just a single taken here. So Osama has just faced his first ball. So it's very important to give a strike to 𝐤𝐤𝐽 as much as possible. If they want to take some lead, the fielding side, they got to get 𝐤𝐤𝐽 out, because 𝐤𝐤𝐽 will not sort of bog down. He will play his strokes. Missed it this time. Beat him a pace. A good comeback by Shafiq. So 2 overs gone, 31 for 1. (31 for 1). 2 overs have been bowled, and Clifton Ghazi are 50 runs exactly behind. Current run rate is just above 15, which is not bad. Indeed, it's a pretty good one. And they are still in a very good position to take a lead, because 24 deliveries to be bowled in their innings, and they've got 9 wickets in hand. Particularly, they've got 𝐤𝐤𝐽 at the wicket, and 𝐤𝐤𝐽 already got a live. As I was mentioning, he can make them pay, and can make them pay daily, because he likes to play big shots, and Osama can join the company as well. Pressure on the fielding side, and they've got to be very accurate. Mukhtar starts with the wide, played on the offside. This is where they should be very careful, Farooq. These runs can change the game, and can change the complexion and the tempo of the game. High in the air, somebody wants it. 2 men converging. Who will get this? Well caught. Communication was absolutely crystal clear, and Osama has to go. Caught it long off, and 2 down now, Clifton Ghazi. Osama tucked his bat under his armpit and making his walk back. He was trying to go down. I think ball hit the top of his bat, and then going up and then sliding down, and fielder caught that one beautifully. He's gone for 1. Tahiri is the next man in. 2 wickets have gone down, and his side is in little trouble. Hassan Raza with his family, enjoying every bit of it. Probably telling his son how to adjust the field. Missed out again. It's what a full toss. And Muzammil 𝐤𝐤𝐽 usually doesn't miss the opportunities like that. It was a friendly ball, and the bowler got away with that. 𝐤𝐤𝐽
is a right-handed batsman. Tahiri standing at the non-striking end because batsman crossed over while the catch was taken. Big shot, grand shot. That's gone miles. Oh goodness me, that's gone out of the park. That should be 12 runner. It must be. That was pitched fairly back and gave batsman enough space to free his arms. And 𝐤𝐞𝐫 really pounced on that one. Look at that. Backed himself on the back foot. He was camping on the back foot most of the time. Goodness me, how far it traveled. That was an enormous hit. Well played again. 6 more. 2 gigantic maximum from 𝐤𝐞𝐫. He's on fire. That was a poor ball. He became very predictable. He pitched back, batsman pulled him over mid-wicket, and then he bowled right under the slot of his bat. That was a bad ball. Pitched up, and 𝐤𝐞𝐫 accepted that gleefully and dispatched many a miles. Whenever batsmen go down the ground like that, they look so classy. And Muzammil 𝐤𝐞𝐫 was absolutely spot on with everything. Took glorious shots. They dropped him, and now he's making them pay. Why? That's the pressure. The pressure the bowler must be feeling right now. Yeah, you're right. In any form of cricket, key batsman always makes you pay. Don't drop catches. Don't make these errors. They could result as your defeat. Missed out, tried to play across the line. Settled with 1. Still, if they pick Muzammil 𝐤𝐞𝐫 in the next over or so, still they can prevent themselves from being damaged, and think he's a dangerous customer. There's still plenty of things that they can get back in their hand. Indeed, they've got every chance to get 𝐤𝐞𝐫 out, and then they've got every chance to get a lead, even consider a very small lead. But at the moment, 𝐤𝐞𝐫 is dominating, and runs are coming up very fluently, particularly from the 𝐤𝐞𝐫 bat. And as long as he stays, runs will come. I can make you sure. Tahiri's first ball. Beautifully bowled. Beats the outside edge. And the dot ball to finish the over. 3 gone, 48 for 2. Clifton Ghazi. .48 for 2, Clifton Ghazi. Time for the change in voices. Faisal Athar and Nadar Mushtaq are moving into commentary position. बहुत शुक्रिया आपका फरूख रियाज और राना अशफाक. इस वक्त टोटल स्कोर हो चुका है 48 for 2. 3 ओवर्स में क्लिफ्टन गाजीज और 33 रन्स अभी मजीद बनाने हैं क्लिफ्टन गाजीज को. मुजम्मिल 𝐤𝐤𝐫 जिन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन्स बनाए हैं. ताहिरी अभी तक अपना अकाउंट ओपन करने में नाकाम नजर आए. वो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं. शफीक की उम्दा बॉलिंग, 14 रन्स दे चुके हैं बिना किसी विकेट लिए हुए. और इस दफा भी जोर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे और मिडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी जो है वो 16 पे पहुंच चुका है और ट्रायल्ड बाय 33 रन्स है. सो 4 होंगे कि मैक्सिमम रन्स हासिल कर रहे हैं. 48 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं. चौथे ओवर का खेल जारी है. और इस दफा बहुत खूबसूरत कनेक्शन, और इस कनेक्शन से मिले मैक्सिमम 6 रन्स.
अच्छा बॉल था, आगे पिच हुआ था, थोड़ा सा इन स्विंग भी हुआ, लेकिन बैट का जो स्विंग था वो बड़ा कमाल था और कनेक्शन बड़ा भरपूर था। इसी वजह से भरपूर रन्स मिले, 6 रन। बराह रास्त आप देख रहे हैं जियो सुपर, पाकिस्तान का सबसे पहला स्पोर्ट्स चैनल, उसकी स्क्रीन पर KTPL सीजन 2 के मैचेस। मुकाबला इस वक्त क्लिफ्टन गाजी वर्सेस FB फाइटर्स के दरमियान। ये नादरा इस दफा सीजन 2 में काफी अच्छे मैचेस हो रहे हैं और बहुत करीब मैचेस पहुंच रहे हैं। और इस दफा कमाल की बात यह है कि बल्लेबाज बड़ा धुआंधार अंदाज इख्तियार किया हुआ है और काफी छक्के लग चुके हैं अब तक। और कमाल की बात यह है कि जो बल्लेबाज हैं उनके रिस्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। इस दफा टांग पे गिरी हुई गेंद थी, लेकिन टांग पे ही लगी, लेग बाय का रन होगा यकीनी तौर पर। तो ये एक अच्छा है कि मुजम्मिल जो ऑन फायर हैं वो अब उनको वो सामने आए हैं और अब देखते हैं कि वो इस ओवर को कैसे डील करते हैं। 32 रन कर चुके हैं वो 15 बॉलों पे। जी हाँ बिल्कुल, मुजम्मिल कामों की जो कि हिट्स लगाने में अपना नाम रखते हैं, एक बड़ा नाम है टेप बॉल की दुनिया में। यहाँ हमने देखा काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एरियाज के हिसाब से नाम रखे हैं, जिसमें हमें भी समझने में आसानी हो रही है कि इनका जो ताल्लुक है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो अपने नाम के साथ उन्होंने लगाया हुआ है। जैसे मुजम्मिल है, इनका डेफिनेटली ताल्लुक जो है वो कामुकी से है। इसी तरह अली शेर खान 33 नंबर की वो टी शर्ट पहने हुए 1 विकेट ले चुके हैं। और इस दफा पुल किया है, कनेक्शन अच्छा है और मैक्सिमम मिलेंगे 6 रन। जी हाँ, भरपूर 6 रन का इजाफा किया है इस वक्त मुजम्मिल कामोकी ने। 38 रन पर जा पहुंचे हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने पुल किया। पुल करते हुए हिट लगाई जो कि सिक्सर था और 6 रन का इजाफा हुआ है क्लिफ्टन गाजी के रन्स में। ये नादरा काफी देर से खेल रहे हैं और टाइम अच्छा कर रहे हैं, बॉल को अच्छा रीड कर रहे हैं। तेज बॉल हो, स्लो बॉल हो, आगे गिरी हुई बॉल हो, सो कनेक्शन भी इसी वजह से उनका बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो रहा है। इस दफा एक्स्ट्रा कवर के तरफ खेले हैं, फील्डर आए तेजी से और 1 ही रन बनेगा। स्कोर एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलते हुए सिर्फ 1 रन का इजाफा, क्योंकि आउटफील्ड काफी हैवी नजर आ रही है और थोड़ी सी स्लो है, जिसकी वजह से जो बाउंड्री है वो भी नहीं लग सकी। और प्लस ये कि फील्डर भी मौजूद था, रोक सकता था इजीली और रुक भी गई गेंद। बॉलर की भी कोशिश है कि वो आगे बॉल करें और उसकी वजह से थोड़ा सा चूक जाते हैं तो वाइट हो जाती है बॉल और रन्स भी कंसीड कराते हैं, बॉल भी दोबारा करना पड़ती है। इसके साथ साथ बल्लेबाज का भी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि वो ये चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा भी अगर ऐसी लेंथ पे बॉल मिले जहां से वो पिक कर सकें, तो उसी के इंतजार में है, क्योंकि यकीनी तौर पे मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। इस बॉल की तारीफ करना पड़ेगी, बहुत शानदार बॉल थी, मिस हुई लेकिन 1 रन मिला। और ताहिरी इस वक्त बिल्कुल ही बॉल को टाइम नहीं कर रहे, बल्ले और बॉल का मिलाप नहीं हो पा रहा। लेकिन डगआउट क्लिफ्टन गाजीज का कामों की भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं अपनी टीम का। क्लिफ्टन गाजीज के लिए एक मरतबा अली शेर, एक और अच्छा बॉल, इस दफा मौका नहीं दिया, रूम नहीं दिया। कोशिश मुजम्मिल ने काफी की थी कि इसको लिफ्ट करें, लेकिन सिंगल ही बन पाएगा। सो अली की शानदार बॉलिंग जारी और बॉलर कोशिश कर रहा है कि यॉर्कर ही करे और बल्लेबाज मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि इसको लिफ्ट करे। सो दोनों का एक बेहतरीन मुकाबला जारी इस ओवर में।
सब ताहिरी का रिस्पांस देखना है कि वो क्या करते हैं। 9 रन ट्रायल्स बाकी हैं। 27 रन के एवज 1 विकेट हासिल करने वाले अली शेर बॉलिंग के निशान पर तैयार। इस दफा स्लो बॉल थी, उसको अच्छा कनेक्ट किया है और लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रन। इनफैक्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है 6 रन। बहुत अच्छा कनेक्शन था। 5वें ओवर के इख्तिताम पे 78 पे 2 क्लिफ्टन गाजी। कोशिश थी इनकी स्लो करने की, फुल टॉस हुई और उसका भरपूर फायदा उठाया तायरी ने और गेंद को भेजा 6 रन के लिए। और यूं 5 ओवर के इख्तिताम पर 78 रन, 78 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बॉलिंग में अली और मुख्तार एक एक विकेट हासिल कर सके। अली लिटिल बिट एक्सपेंसिव हैं, 33 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की। शफीक ने 26 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। मुख्तार ने 17 रन दिए और एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। तो अब देखना है कि आखिरी ओवर का खेल बाकी है। ट्रायल बाय 3 रन्स और देखते हैं कि इस ओवर में क्लिफ्टन गाजी कितने रन्स मजीद बनाने में कामयाब होती है और चैलेंज करती है एफबी फाइटर को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है क्योंकि जब लास्ट ओवर 6वां ओवर चलता है तो उसमें आप डिसाइड करते हैं कि दूसरी टीम को आप कितना चैलेंज करेंगे और अंडर प्रेशर कर सकेंगे। अगर आप रन्स मैक्सिमम बना सकें और मुजम्मिल इस वक्त 40 रन पर खेल रहे हैं, 18 बॉलों का सामना किया और तायरी भी अब इस वक्त थोड़ा से 1-2 अच्छी हिट्स लगाकर फॉर्म में आए हैं और इस वक्त मुजम्मिल फेस करेंगे जो मुजम्मिल इज ऑन फायर। और इस दफा शाहनवाज ओवर द विकेट कराते हुए उन्होंने जो बॉल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने एक विकेट हासिल की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट शाहनवाज की जो कि मुजम्मिल कामों की थी और उनको उन्होंने वापस पवेलियन भेज दिया 40 रन। जबकि हम ये इमेजिन कर रहे थे कि शायद वो अपनी निस सेंचुरी कंप्लीट कर पाए, लेकिन ऐसा करने में नाकाम कर दिया है शाहनवाज ने। बहुत ही जबरदस्त बॉल और मुजम्मिल कामोकी का डिपार्चर 40 रन पर 19 गेंदों का सामना किया उन्होंने। 210 का स्ट्राइक रेट था मुजम्मिल का और बहुत अच्छी शानदार इनिंग खेली और इस इनिंग के बदौलत जो ट्रायल्स थे वो काफी कम हो गया। 3 रन बाकी हैं और नादरा देखा गया कि इस अब जो मैचेस हो रहे हैं खासतौर पे इस मैच में कैचेस बड़े अच्छे पकड़े गए और कैचेस की वजह से मैच जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, एफबी फाइटर्स फुल फॉर्म में आते हुए, क्योंकि अब तक वो अपना मैच जीतने में नाकाम रहे, जबकि क्लिफ्टन गाजीज ने अपने 2 मैचेस जीते हुए हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवाज इस वक्त ताहिरी का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हैं। टॉप एज आउटसाइड एज हुआ और सीधा स्लिप में गेंद गया जहां पे फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सो एक और नुकसान क्लिफ्टन गाजी को। शाहनवाज की भरपूर गेंदबाजी, जिन्होंने आते ही पहले 1 विकेट ली, उसके बाद उन्होंने दूसरी विकेट ली। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट जो उन्होंने ली है वो मुजम्मिल की ली, उसके बाद शाहनवाज ने दूसरी विकेट भी नवाज की ली। अच्छा बॉल था लेकिन बहुत जोर से खेलने गए इसलिए बाहरी किनारा लिया और मिस किया बैट ने बॉल की लाइन को और विकेट गवा बैठे हैं क्योंकि इंटेंशन बड़ी क्लियर है। हक नवाज कोई रन बनाने में कामयाब ना हो सके, पहली बॉल पे आउट हुए और जबकि इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि इस वक्त विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रन्स हैं, वो किसी भी सूरत में और किसी भी अंदाज में आने चाहिए। अरबाज खान नए बल्लेबाज क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से।
जब तक ताहिरी मौजूद हैं उनसे काफी होप्स मौजूद हैं क्लिफ्टन गाजीज को, लेकिन गेंदें बहुत कम बाकी हैं। 3 रन और 4 गेंदें इस ओवर में। नादरा इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि 4 गेंदों पे जितने ज्यादा रन्स बटोर सकें उतना ही फायदा अपनी टीम को पहुंचा सकेंगे। और इस दफा फिर कनेक्ट किया है, सीधा बॉल गया है, लेकिन यहाँ पे फील्डर की यहाँ मिसफील्ड हुई, लेकिन उसकी कवरिंग कर रहे थे दूसरे फील्डर, सो एक ही रन बन पाएगा। अच्छी बॉलिंग और बांध के रखा हुआ इस वक्त बल्लेबाजों को। अब आए हैं ताहिरी जो काफी देर से विकेट पे हैं, 7 बॉलों का सामना किया था इन्होंने, 9 रन पर खड़े हैं। सो अब ये बाकी मांदा 3 बॉलों पे देखना है कि क्या ये 1 या 2 अच्छा कनेक्शन कर पाएंगे। गैप बना के खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन वहां पर फील्डर्स मौजूद थे जिसकी वजह से उनके बाउंड्री नहीं लग सकी और खातिर ख्वाह रन्स का इजाफा नहीं हुआ क्लिफ्टन गाजी के स्कोर कार्ड में। आगे गिरा हुआ गेंद, भरपूर कनेक्शन, यकीनी तौर पे बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन्स, बहुत शानदार शॉट, बड़ी क्लीन हिट की है। बॉल पे नजर थी, आगे गिरा हुआ गेंद था, सर नहीं हिला और बैट का स्विंग जो था वो भरपूर तरीके से कनेक्ट हुई बॉल बल्ले पे और बॉल गई बहुत दूर। 6 रन्स के लिए 2 बॉलों का खेल बाकी। इस दफा पुल किया है और ये भी मिडिल हुआ है यकीनी तौर पे मिड विकेट की तरफ। 6 रन्स, खासा ऊंचा खेले हैं मिड विकेट के और इसी वजह से 6 रन्स हासिल हुए हैं ताहिरी को। ताहिरी अपना स्कोर बढ़ाते हुए 21 पे जा पहुंचे हैं। 9 गेंदों का सामना किया है। अच्छी जारहाना बैटिंग अब उनकी नजर आ रही है। थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने सेट होने में। ये शॉट में बॉल बहुत अच्छा पिक किया, हालांकि उन्होंने स्लो वन की थी और थोड़ा बॉल पड़ के अंदर की तरफ भी आया, लेकिन बॉल पे पूरी नजर थी, इसी वजह से कनेक्शन भी बहुत अच्छा कर पाए ताहिरी। और लास्ट बॉल है और 10 रन की लीड हासिल कर चुके हैं क्लिफ्टन गाजी। काफी बार थी, अंपायर्स का देखना होगा यकीनी तौर पर वाइड बॉल। तो बड़ी तेजी से ये मैच जो खासियत है टिप बॉल की कि बड़ी तेजी से मैच स्विंग होता है, कभी बॉलर की तरफ प्रेशर आ जाता है, कभी बल्लेबाज की तरफ प्रेशर आ जाता है। तो यही खूबसूरती है इस फॉर्मेट की। और आगे गिरा हुआ गेंद, बहुत अच्छा कनेक्ट किया, लेकिन फील्डर हैं और इस दफा कोई गलती नहीं की फील्डर ने। आखिरी बॉल थी, कोशिश थी ताहिरी की कि इस पे मैक्सिमम हासिल कर सकें, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सो यहाँ पे रन्स इंपॉर्टेंट थे। 12 रन की लीड हासिल कर चुके हैं क्लिफ्टन गाजी 93 पे 5, 6 ओवर के अख्ताम पर। आ गई बॉल की, इन्होंने अपनी लेंथ को नहीं छोड़ा और उसको लिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डर ने भी बॉल पे नजर रखी और एक शानदार कैच पकड़ा। और इस कैच की अहमियत यह है कि रन्स कंसीड नहीं हुए। असद ने 12 रन्स बनाए और टॉप स्कोरर रहे मुजम्मिल कामोकी जिन्होंने 40 गेंदों की इनिंग्स खेली और ताहिरी जो है वो सेकंड नंबर पर हैं जिन्होंने 21 रन्स बनाए हैं। 18 एक्स्ट्रास थे, 93 रन्स 5 विकेटों के नुकसान पर क्लिफ्टन गाजीज के 6 ओवर्स में। और बॉलिंग कार्ड को एनालिसिस कर लेते हैं। शाहनवाज ने 15 रन्स देके 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है, जबकि 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे अली और मुख्तार 1 विकेट हासिल कर सके हैं। 12 रन्स की लीड हासिल है क्लिफ्टन गाजीज को। ब्यूटीफुल व्यू। ये फुल मून होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। ब्यूटीफुल शॉट।
और जी कमेंट्री बॉक्स में अब एक तब्दीली होने जा रही है। और बहुत शानदार स्ट्रोक्स थे, कमाल के स्ट्रोक्स खेले हैं। बैक फुट पे गेंद हो या फ्रंट फुट पे हो, और यहाँ पर दाद देना पड़ेगी, कैचेस भी बहुत अच्छे लिए गए हैं। सो सब भरपूर एक पैकेज और पुल किया था ये, और ये कमाल की कनेक्शन है। जो गेंद मिस हुई, हवा में गई, नीचे फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और शॉट भी बड़े शानदार नजर आए इस इनिंग में। बॉलिंग भी बहुत कमाल थी और बहुत ही कमाल के शॉट्स थे, चाहे मिड विकेट हो, पुल शॉट हो, फुल टॉस पे अगर शॉट हो, लेकिन मैक्सिमम हासिल होंगे आपको अगर आप कनेक्ट अच्छा करते हैं। और ये कोशिश थी आखिरी बॉल पे जो कैच हुए। भरपूर इनिंग और भरपूर कैचिंग। और अब आप सुन सकेंगे कि आसिफ और उनका साथ देंगे फारूक रियाज। Thank you very much, Badar Mushtaq and Faisal, a former international cricketer. FB fighters are ready now. On the other hand, Jalad Khan, he is from Layya, so Layya Express. FB fighters bowled really nicely. They've taken some tremendous catches. Clifton Ghazi is there, the defending champions, already got a couple of victories in second edition of Karachi Table Premier League. So here we go, plays the call, first delivery, and I've been joined in combox by Farooq Riaz. Welcome, Farooq. Thank you very much, K. Asif. The first ball of the fresh innings. Swing and a miss straight away. Intention is pretty clear, just to take on the ballers right from the word go, and it's pretty often we see the batsmen don't take time initially. They like to attack right from the first ball. Jalad Khan had a fantastic first edition of Karachi Table Premier League. Got several wickets there. This time it's high in the air. It's going and goodbye. So first maximum of the innings. What a start for Usman. What a shot that was. What a brilliant shot. It was pitched up in the slot and he struck it beautifully. Look at that swing of the bat and where the bat finishes. Swing and a miss this time, another dot ball. An awesome shot towards wide of long on. He stayed in the crease and just gave us everything. It's got the height, it's got the distance. I like about Jalad Khan that he's a superb bowler, and he used to come up with varieties, slow deliveries. Look at that, it's high in the air, and nicely taken. And this time he got a wicket and smiling, and of course that after a huge maximum, good comeback. And I was talking about his slow deliveries, the way he came up. What a start for Jalad Khan now. Look at that. Again, the batter was trying to hit that hard. And well-judged catch by wicket-keeper. Good change of pace, and it worked in the favor of bowler. Usman Jan just came and went. Gone for 6. 6 for 1. Haris Ali, captain of FB Fighters, new man in. Haris Ali is the former first-class cricketer as well. Played for the Karachi Blues, Karachi Whites, and under 19 as well. I think he has represented Port Qasim as well. Plenty of experience there. Played tremendously in first innings, smiling, and of course that this is the passion required at Badar Expo Karachi Table Premier League. Just 6 runs away now there. Wide on the leg side, and
He goes for 6, 20 for 1. Well, little bit change in batting order. Tasawwur Abbas was on number 6 in first innings, but now promoted. Tasawwur Abbas is a very dangerous man. Played a couple of very, very good innings in first edition for the FP Fighters. And right now, they got 8 runs lead. Second over is in progress. Farman, after conceded a 6, now is back on line. Tasawwur. Down the leg side, it's high in the air, and it's taken. It's taken, another loss, a huge wicket. And Farman is on a hat-trick. Back-to-back wickets, it was flicked away to the onside and knew there was a man specifically placed. Just 2 boundary riders and one of them was placed here. And it's a good take, good comfortable catch. And Tasawwur just came and went. Commentator's curse. I was praising himself. He's such a nice player. Look at that shot. He just flicked away. And nicely taken. No mistake from the fielder at all. He is not happy at all. Tasawwur Abbas gone on duck. Farooq Riaz, when we talk about the tape ball cricket, it's always sensation, you know, and especially now Wasim put the new man in, and when it has been broadcasting all the way, all over the world, maqtv in America, we are Geo Super all over the world, so enjoying and the fantastic views. Yes, one of the spectacular views, aerial view. Misses again, he was on a hat-trick. He just got away with that. Farman bowled beautifully. He conceded a maximum. After that, he came back strongly, picked up back-to-back wickets. Good bowling. He understands as the batters are going across the line, just trying to hit these stumps, coming up with sheer pace. Good idea from Farman. This is beauty. This is beauty. Whenever you bowl a dot delivery, it really puts pressure on the batter. And this is the dugout. Some parish faces. This is what the premier bowlers are capable of. He considered 1-6, cannot be punished every time. After that, superb comeback. And now last ball coming up of over number 2. Well bowled again. Magnificent over by Farman. All the experience and class came together. 2 gone, 20 for 3. मैं भी मांगूंगा तो दे दीजिएगा यूनुस भाई, मेरे पास 2 हैं. 20 for 3 after 2 overs. Federal B area fighters, they are in slight trouble, I reckon. They are enjoying the lead of just 8 runs. So superb is the bowling from both ends from Clifton Ghazi. Jallat will commence his over number 2. Swing and a miss. Beautifully bowled again. Change of pace, change of bounce, and starts with the dot ball. Laya Express is on fire. Jallat Khan started his over with his dot delivery. And when I was discussing about this youngster all the way from Laya, played for Players Development Program for the Lahore Qalandars as well, went to Namibia as well. This is beautifully bowled.
I'm telling you, this guy is special. Coming up with slow deliveries, leg cutter, off cutter, slow bounces, full of energy. Great exhibition of left-arm bowling from both ends. He almost a nothing shot. So he was trapped right in front. But in this format, it's a dot ball. It was a plum, LBW. It was a plum. Outside edge could be out. Oh, misses. It was a definite chance. It's missed by the fielder of Clifton Ghazi. In the end, the batsman crossed for one. Whenever they mistime the shot, they tend to check a ball. Well, you know that he went across the line. I'm telling you that if you go to play within the line, let's try to play in the cover regions, extra cover region. It won't help you all the time. And this time he was wavered on the legs, and it's a beautifully played. Wonderful shot. Went for the maximum. Finally, a piece of brilliance we saw from the man in red. Lovely shot, length ball on leg stump. Jalad Khan just gave the opportunity, but that was an extraordinary shot. Pick-up shot. Beautifully played. Full toss outside the off stump, mistimed. This could be too comfortably. The outfield is not that quick. Coming back for the third, could be run out. Thankfully, he came back. Jalad Khan already conceded 9 runs. So far, 2 dot deliveries. And now 17 runs in 3 overs. Last delivery remaining. Farooq. I don't think so that it's impressive effort so far from the FP fighters. Ending up this over with this single. So very good spell from Jalad Khan. Conceded 22 runs in 2 overs. And FP fighters after 3, 30 for 3. $30 for 3 after 3 overs. So Federal Beta Fighters is leading by just 18 runs. They were 12 runs behind. So in the end, I must say, Clifton Ghazi are on the driving seat at the moment. They just need to finish strongly. FP Fighters 30 for 3, and the combos have been joined by Rana Shwak. Welcome back. Thank you, Farooq Riaz. 30 for 3. They are lead by 18 runs with 3 overs to spare. Edged, and it fell short of the wicket-keeper. Good ball from Farman. Already picked up a couple of wickets and gave away only 8 runs in 1.1 overs. Yes, he just considered one maximum and produced so many dot balls. That's the quality of this left armour. Indeed, he's a very fine bowler. And if you can give only 8, 6 or 10 runs in an over, in 6 over format, particularly in tape ball, it doesn't get better than this. Another short and rising ball. Good bounce, good carry. That one took off a little bit. Another dot ball. Number of times the batsmen have missed a similar length, and they could have easily ramped over the third man and somewhere around over point or gully. There is no protection, but this is how the tape ball is played. The batsmen try to heave or pull or hook to the onside, and they don't concentrate much on the offside. This is in the air. Fielder, oh, I think he overran on that one. Ball was tying at him.
He was trying to catch that. It dropped, I think, in front of him, and then also eludes him to go to the boundary. It's not only the drop catch, but also the boundary conceded. Farman didn't like it. He was struck well, but certainly not enough distance, or he just misjudged it completely. The body wasn't behind. In the end, the ball deflected his body and went over the boundary. So welcome boundary for the man in red. Yes, he should have been diving in front of him, but he, I think, sort of blocked himself, and ball pitched just in front of him and then went away for 4 runs. Wasim is taking strike, has 13 against his name. In the air, who wants it? Wicketkeeper placing himself under the ball and grabs it quite nicely. So finally Farman has got a wicket. The catch was dropped in the previous ball, but once again he produced a wicket-taking ball, and keeper did everything right, covered the line, and the end a good high catch. So complete dominance from Clifton Ghazi in this innings. Extra bounce did the trick, and certainly a wicket-taking ball there. The good catch, good camera work too, and nobody came, and the clean catch. Wasim didn't middle it, as you saw it, and he knew he was in trouble here. Good take, and the chances are slipping away from the man in red to post a decent score. Remember, whatever they will post, 12 runs lesser than that will be chased by Clifton Ghazi in the 4th innings. So certainly they are on top. 34 for 4. Hassan Rashid walking out into the center for FB Fighters. Now they are struggling a little bit. Hassan Shahid having a glove in the one hand and inner, or the different kind of a glove in the other hand? I think inner. 34 for 4. Ahead by 22 runs with only 16 balls to be bowled in this innings. Misses again. How many times he delivered in that line of length and beat the batsman? I think Farman deserves appreciation for this wonderful bowling. Not only he kept the batsman quiet, but at the same time he picked up 3 wickets. You can't ask more than this from a bowler in this format. That's gone straight down the ground. Is it long enough? Is it long enough? Certainly. It went way over the hoardings. A superb shot to end the over. Commentator cursed straight away. The moment I admired him, he bowled a bad ball. That was right in the radar of the batsman. There you see. And he hit that one through the line onto the offside for a 6. Glorious shot. He was down on his knees, wide outside the off stump, and rare opportunity the batsman got to free his arms, and beautifully struck. That must have given him a lot of confidence. He was feeling good, and in the end, he gave a good pose for the photographer. They need to play more strokes like this to give them a good target. Although in first match we saw DHA Debunks able to defend 56. They bowled extremely well, and their fielders did well as well. And FB Fighters got to do same if they want to win this match. Certainly, the first match was a thriller. It turned out to be a low-scoring thriller, although the second innings or the first innings was lots of runs we saw from both sides. Tahiri just started his new over. And this is the beauty of cricket. Low scores can produce a wonderful game at times. And high scores can produce a very boring game at times.
For example, one team getting 150 and others getting out for 20. That was a leg by the last run. And at times the team scored 60 in 6 overs. Another scored 59 or 61 on the last ball. To me, competition should be there. I think doesn't matter you get 60 or 70, but if you get 70, you got to defend it, or at least try to defend it. Big shot by Hassan, and has cleared the holdings nicely. That's how he plays. He likes that region. Clear the front leg and heaved away for a much needed maximum here. Although man was back there at the boundary. There you see it again. He backed away a little bit, then swatted away over deep square leg for a 6. This one is played away down towards the long on for a single. Most of the runs he scores to the onside, so anything around outside the off stump with a fuller length can trouble Hassan. Right and left in combination. The Haris, who smoked a beautiful 6 in the last over, once again has got the strike back. Tahiri, none for 8. Outside the off stump, is it close enough? Yo, wide given. It was so close. I think tough call for the bowler's point of view. It looked pretty tight, but nevertheless, batsmen got a couple in terms of extras, and ball will have to be bowled again. Was aiming to bowl full outside the off stump to the right-handed Haris. Tahiri. Big shot. Has he middled that? That's gone high in there. And well taken, well taken. Very well judged catch indeed it was. Wasn't an easy chance. And right at the boundary, he completed the high catch. So Haris has to go now. It got the height, but didn't get the distance. And there he goes. There you watch it again. He stood in his crease and threw his bat at that one. It went many a miles in the air, then came down very nicely into the hands of the man at long off. Haris is the latest man to be dismissed after making only 11. Ali Sher Khan, we saw him as a bowler, nice time to swing his bat for good effect. He has just came out to the center. Well bowled, full outside the off stump. Good thinking from the bowler Tahiri, and he finished this over in style. 1 for 10 is 51 for 5. We are almost in a similar sort of a situation which we had in the last match. 57 was the target, and let's see what is going to be the target in this one, because they've got 39 with 6 balls to be played, and they can get it to 50, 55, even 60. But let's see what the bowler's plan is. Left-handed Hassan is on strike, who has 8. Ali yet to get off the mark. Hassan got a peculiar sort of a stance. Square on a little bit. Very valuable and very vital couple of runs in terms of wide. He starts with the wide, Saram.
53 for 5. They need to finish. They need to finish it strongly to challenge Clifton Ghazi. The batting line of Clifton Ghazi is so strong. So certainly there's pressure on the man in red. Well bowled, change of pace, pull outside the off stump. Completely missed by Hassan. This is where they should be bowling. Outside the off stump, fuller as well. And batsman didn't have any space to free his arms. You know, bowler do practice it a lot in international level. Particularly, Malinga was very specialized in that art. Oh, this could be a no ball. High full toss and smashed away for maximum. And batsman didn't get a no ball signal. That's why he's annoyed. He's absolutely annoyed, the Hassan, telling the umpire that that was above waist height. And it looked like. I think bowler very lucky that he got away with that one. That should have been called a no ball. But nevertheless, batsman got a 6. And it can do world of good for his confidence. So no free hit. He waited well and smoked away out of the park. Gigantic 6 from Hassan Ali on the slot. And he cleared his front leg in style to pick up a maximum here. That was a colossal hit, Farooq. He just whacked it with all the power which he has. Look at that. Absolutely colossal. Smashed out of the park. Smashed on the ground. Is it long enough? Certainly. 3 in a row from Hassan. These are damaging runs for Clifton Ghazi. That's what I mentioned when he hit a first 6. That it would do world of good for him. And it has been proved. 3 6s in a row. Look at the final one. Hit it on the up, but hit it well enough to clear the man at long on. 3 6s in a row, and now bowler is in a troublesome situation. The length wasn't up to the mark, and that is why he paid the price. Hassan is a dangerous customer towards the onside especially. It was a full toss, it was a length ball outside the off stump. How he finishes now, 2 balls left. And now they are led by 59 runs. Runs, at least 1. Can they go for the second? I think he will have the strike. Oh, is it run out? It is. But Hassan wanted the strike, which he gets. Good thinking. I think very unselfish stuff by Ali. He has to walk back. He wanted his partner to come back, and Hassan did well. And somehow he got the strike back. And the batsman who got out was very deft as well, because he left the crease when his partner reached over there. There you see, he is still standing. Now he's leaving the crease. Well done by him. He gave the strike to a man who was hitting the ball quite nicely. This is the run out. This is the run out. He knew he wouldn't get there, but I think he sacrificed his wicket, but very cunningly, very deftly done by him. Ali Sher Khan goes for naught. Big shot, and he finishes with a maximum. What a tremendous over for Federal Media Fighters. That's why Ali Sher sacrificed his wicket, because he knew that his partner can do the damage. What a terrific over for the batting side, in which 4 6s were hit, and all off the bat of Hassan. Superb batting. Yes, he did right smartly. He moved the crease to ensure the arrival of his partner, and that is why he sacrificed his wicket in form of run out. What a shot that is. Heaved away to the onside. Tremendous exhibition, and certainly momentum is towards Federal Media Fighters. Now it looks like it's going to be a very, very good last innings of this match, because they got some runs on the board, they got some runs to defend, and it can give a very good chance to their bowlers and fielders to have a fight. So the balloons could be seen, and there you see the moon.
In scorecards, you can see Hassan getting 33 in 9 ball. 13 was scored by Wasim and 11 was scored by Haris. The bowling card we have, Farman was outstanding with 3 for 18, 1 for 22 for Jalad. Tahiri was impressive, 1 for 10. And Sehram was extremely expensive, none for 27. भरपूर तरीके से आपको अपने फन का मुजाहरा करते दिखाई देंगे पूरे पाकिस्तान में जाके, बल्कि पूरी दुनिया में जाके जनाब ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। लास्ट टाइम कतर में एक्सपो So Clifton Ghazi, they need 67 runs to win. As Net said, the broadcasters, and this is a drone cam, one of the cameramen, I reckon. And now we are ready for the highlights of this innings. The second innings of Federal Fighters. The first shot started with the maximum. And then he got out of the mistime shot and good smart catch by the keeper. And then it's a boundary to the onside. The fielder was inside the circle. Farman bowled really well. It was a maximum. Then he got the revenge. Fine catch by the keeper. And then flick of the wrist, out first ball. He was on a hat-trick on that occasion. Comfortably taken. And flick of the wrist for the big shot. Number of wristy shots we saw. And there's catch at long on. In fact, it was dropped. It was pretty catchable. Another high catch. Keeper made no mistake. And then Hassan played a blinder here. So two batters are coming out for Clifton Ghazi. And now time for the change in voices. Nadra Mushtaq and K. Asif will pick up the commentary. बहुत शुक्रिया फरूख रियाज और राना इशफाक। क्लिफ्टन गाजी के दोनों बैटर्स इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। आज का पहला मुकाबला DHA दबंग्स वर्सेस नॉर्थ नवाब था और DHA दबंग ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद अच्छा कमबैक किया और फतह हासिल की। ये है असद शाह जो कैप्टन हैं क्लिफ्टन गाजी के, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। टेप बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम और जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है वो अपनी टीम की जीत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानिब ये हैं मुस्कुराते हुए उसामा अली सियालकोटी। उनका ताल्लुक सियालकोट से है और आज की तारीख में ये भी टेप बॉल के एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। मुख्तियार मुखरी बॉलिंग के लिए तैयार और मेरे साथ है नादरा मुश्ताक। बहुत शुक्रिया के आसिफ। पहली गेंद काफी तेज करवाई मुख्तियार ने, असद ने सामना किया लेकिन किसी भी रन का इजाफा नहीं हो सका। अच्छी गेंद थी, ऑफसाइड पे आई। जी हाँ, FB फाइटर्स ने 81 बनाए, फिर क्लिफ्टन गाजीज ने और असद शाह और ये कैच ड्रॉप कर दिया। ये कैच ड्रॉप कर दिया है और अब बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं यहां पर उसामा जो कि असद जो कि हिट करने के लिए गए थे और प्रॉपर्ली टाइम नहीं कर पाए। जी हाँ, यही मिस फील्डिंग जो है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है FB फाइटर्स के लिए। और क्लिफ्टन गाजी चूंकि एक रिदम के साथ आ रहे हैं, जीतते हुए आ रहे हैं, उनका मुराल भी बहुत अप है। और इस वक्त FB फाइटर्स को ये देखिए किस तरह ड्रॉप किया है उन्होंने कैच, और बहुत इजी कैच था ये के आसिफ। जी हाँ, और इस दफा इसको डिस्पैच कर दिया है मिड विकेट की जाने। फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छा कट ऑफ किया फील्डर ने और 1 रन बना। 11.82 की औसत से रन दरकार है ये मैच जीतने के लिए। और ज़बरदस्त मौसम है आज कराची का और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। गर्मी का
खात्मा हुआ है और जोर टूट चुका है गर्मी का। आज बहुत एंजॉय करने वाला मौसम है। जी हाँ, और आज हमने मैच को भी बहुत एंजॉय किया। जो पहला मैच हुआ था वो भी बहुत जबरदस्त था। सोने पे सुहागा का काम हुआ उस वक्त जब DHA दबंग्स और नॉर्थ नवाब्स ने एक दूसरे के साथ मुकाबला किया और बहुत ही जम के मुकाबला किया। असद शाह, मुख्तियार, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, अंपायर का इशारा कि ये 2 रन्स मजीद होंगे और वाइट डिलीवरी और नो बॉल के इस टूर्नामेंट के कवानीन के मुताबिक 2-2 रन्स रखे गए हैं। 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल एक मैच है और इस फॉर्मेट के ऊपर बहुत सी डिस्कशन हुई, लेकिन जिस तरह आज पहला मैच हुआ है उससे साबित होता है कि विजन बहुत बड़ा था। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, वेल कनेक्टेड एंड इट्स गोइंग आउट ऑफ द पार्क। बहुत ही शानदार छक्का ओवर एक्स्ट्रा कवर। बेहतरीन शॉट लगाया, ट्रेमेंडस शॉट बाय असद। बहुत ही बड़ा छक्का था ये। भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करते हुए 6 रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर फेंक दिया इन्होंने गेंद को। असद शाह की यही रेप्यूटेशन है और इस दफा इसको खेल दिया है, पुल किया है ओवर मिड विकेट बाउंड्री। एक और शानदार कड़ाकेदार छक्का। असद शाह इस वक्त खतरा बनते हुए कैच ड्रॉप किया था असद शाह का। ये देखिए, पुल किया शानदार तरीके से और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, असद शाह का बल्ला इस रन्स उगलना शुरू हो गया और रन्स भी इतने खतरनाक कि 6 पे 6। और इसके साथ ही पहले ओवर का इख्तिताम हुआ है। 22 रन्स बनाए हैं बगैर किसी नुकसान। और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है 9.00, 45 रन बनाने हैं बकिया 5 ओवर्स में। जिस तरह से आगाज किया है क्लिफ्टन गाजीज ने, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्लिफ्टन गाजीज के लिए। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं इस वक्त असद और उनका साथ दे रहे हैं उसामा। डेफिनेटली आप का अगर पार्टनर इतना कॉन्फिडेंट हो तो शफीक, बहुत अच्छी गेंद शफीक की। उसामा से अलकोटी भी मुस्कुराते हुए, जाहिर है कि स्लो डिलीवरी थी और इसको जज नहीं कर पाए। चेंज ऑफ पेस डिलीवरीज हमेशा से कारगर साबित होती हैं। एग्जैक्टली और अगर एक आध डॉट बॉल हो भी गई तो मेरे ख्याल से क्लिफ्टन गाजीज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि काफी बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं। और स्ट्रेट टू द फील्डर और इस दफा कोई गलती नहीं की। एक शानदार कैच लिया उसामा का और इस तरह पहली विकेट हासिल की है। ये मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर ने एक आसान कैच लिया है। तो इस तरह ये देखिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल टॉस डिलीवरी और सीधा फील्डर के हाथों में। जी हाँ, बिल्कुल एक विकेट का नुकसान। और उसामा जिस तरह से अभी हम बात कर ही रहे थे कि साथ में उनका जो असद साथ दे रहे थे वो बहुत जबरदस्त दे रहे थे, लेकिन उसामा उस वक्त तक उन्होंने अपना जो है इनिंग का सही तौर पे आगाज नहीं किया था। एक ही रन बना पाए और जो माइंड सेट किया था उस तरह का डिलीवर करने में नाकाम नजर आते हैं। अब मुजम्मिल कामों की जिन्होंने फर्स्ट इनिंग बहुत ही आला खेली और काफी अच्छे रन स्कोर किए और अब साथ देंगे असद का। मुजम्मिल कामों की
टेप बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम, और पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की थी मुजम्मिल कामुकी ने। क्लिफ्टन गाजी की टीम अब तक 2 कामयाबियां समेट चुकी है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के सेकंड एडिशन में, और उनका ये कॉन्फिडेंस जाहिर है कि एक डिफेंडिंग चैंपियन है। जी हाँ बिल्कुल, और 2 के साथ ये तीसरी भी हो सकती है जो कि नजर आ रही है। 45 रन दरकार हैं क्लिफ्टन गाजीज को। शफीक उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, जिनका सामना करने जा रहे हैं मुजम्मिल कामुकी ने इसको सीधा खेल दिया है, और फील्डिंग, शानदार फील्डिंग यहां पर। बहुत ही अपने राइट हैंड पर डाइव करके ये बॉल को रोका और यकीनी तौर पर रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहां पर बाउंड्री लगने का पूरे चांसेस मौजूद थे, लेकिन फील्डर की महारत और चाबुक दस्ती ने 4 रन्स रोके हैं, महज 1 रन का इजाफा हो पाया। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, और ये वो एफर्ट्स होती हैं जो आपको जीत के करीब ले जाती हैं। जब आप अच्छे कैचेस लेते हैं, रन्स बचाते हैं, इससे बॉलर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, और यकीनी तौर पर वाइड के 2 रन्स मिलेंगे। जी हाँ, वाइड के 2 रन्स मिल चुके हैं क्लिफ्टन गाजीज को, और डगआउट में भी मुतमईन नजर आ रहे हैं तमाम प्लेयर्स। शफीक, इसको सीधे बल्ले से खेले हैं असद शाह, और 1 रन यहां पर मिलेगा। शफीक ने अच्छा कमबैक किया है, तेज बॉलिंग की है, और लाइन और लेंथ भी बहुत अच्छी है। सो बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। ये वो लेंथ है जहां से असद शाह ने काफी छक्के लगाए हैं, लेकिन क्योंकि तेज डिलीवरी थी उसको सही टाइम नहीं कर पाए, और 1 रन यहां पर मिला। मुजम्मिल कामुकी अब सामना करेंगे। थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ आया है, लेकिन आउट होते में रह गए। बहुत अच्छी गेंद की है इन्होंने, शफीक ने। जी बहुत अच्छी गेंद थी, और ऐसा लग रहा है कि जब हवा चलती है तो टेप बॉल में भी आप विद इन द एयर स्विंग कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा था, कादिर कश्मीरी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, और जोरदार तरीके से इसको हिट करना चाहते थे मुजम्मिल, प्रॉपरली टाइम नहीं कर पाए, और इस तरह 2 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है। 27 पर 1, बहुत अच्छा ओवर शफीक का, सिर्फ 5 रन बने। और यहाँ पर रन रेट भी बताते चले आपको कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.00 की औसत से है, जो कि यकीनी तौर पर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो सिर्फ 10.00, और क्लिफ्टन गाजीज को 40 रन दरकार हैं फतह के लिए। तो लगता ये है कि जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, कहीं पर थोड़े से स्लो भी आए हैं कि आसिफ हर गेंद को ये हिट्स नहीं लगा रहे हैं, जहां पर आउट होने के भी चांस हो सकता है। तो क्लिफ्टन गाजीज के लिए ब्राइट चांसेस हैं। जी हाँ, असद और मुजम्मिल कामुकी 2 मुस्तनद बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, और टेप बॉल क्रिकेट में 1 ओवर में 10 रन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 बड़ी शॉट्स चाहिए, और यहाँ पर क्राउड में हर उम्र के लोग मौजूद हैं, इस क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी शानदार है, और इस दफा देखना होगा, और शानदार कैच लिया है ये, शानदार कैच लिया है ये। और जिस तरह ये शॉट कनेक्ट हुआ था, ऐसा लगता था कि ये बाउंड्री से बाहर जाएगा, लेकिन इस वक्त जितनी भी दाद दी जाए, तमाम ही खिलाड़ी इस वक्त
इनके नजदीक पहुंच चुके हैं। शानदार कैच, बेहतरीन कैच लिया है। और ये रनिंग कैच होता है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और किसी भी गलती का मुजाहरा नहीं किया फील्डर ने। और मुजम्मिल कामोकी का कैच, एक बहुत ही बड़ी विकेट क्लिफ्टन गाजी के नुक्ता निगाह से इस वक्त हासिल कर ली है। ये देखें बाउंड्री पे कैच, और वो भी बहुत ही आला दौड़ते हुए लिया है, कोई गलती नहीं की। कोलैप्स भी हो सकते थे, एक दूसरे से टकरा भी सकते थे, थोड़े से इनकी चोट जरूर लगी होगी क्योंकि कैच ही बहुत मुश्किल था। ये मुजम्मिल कामोकी 2 रन बनाने के बाद बोझल कदमों से डग आउट की तरफ वापस जाते हुए और एक बड़ी विकेट हासिल की है यहां पर। नए आने वाले बैटर ताहिरी पिंडी, और क्लिफ्टन गाजी की 2 विकेट्स यहां पर गिर चुकी हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज। उसामा और ये आउट होने का मंजर, शानदार कैच लिया था, क्लैप्स जरूर हुआ लेकिन रिकवर कर गए। और मुजम्मिल कामोकी खुद भी यकीन नहीं कर पाए इस कैच पर, यकीनी तौर पर अफसरदा हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो मुजाहरा किया है मुजम्मिल ने वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। एक मरतबा फिर अली शेर, और असद शाह ने इसको ऊंचा खेला है, फील्डर बॉल के नीचे है और एक और चांस दे दिया। असद शाह पर आज किस्मत की देवी मेहरबान है और ये ड्रॉप कर दिया है बाउंड्री पे। 3 फील्डर्स एक ही बॉल के साथ है। वही बात है कि जब आप कॉल देते हैं तो बाकी 2 को रुक जाना चाहिए। थोड़ा सा जो है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आई है। एनी हाउ कैच ड्रॉप हुआ और यही लाइफलाइन है। जी हाँ बिल्कुल, काफी देर गेंद फिजा में रही और फील्डर प्रॉपरली बॉल के नीचे नहीं आए और इस दफा लगता है, और इस दफा ये कैच हो गया और ताहिरी पिंडी इस दफा आउट हो गए। इस दफा कैच लेने में कोई गलती नहीं की। सो ये के बाद दीगरे विकेट्स तो हासिल कर रही है एफबी फाइटर्स की टीम। और इस वक्त पांसा पलटता हुआ नजर आ रहा है क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से। एफबी फाइटर्स वाकई फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ताहिरी पिंडी का डिपार्चर, कोई भी रन नहीं बना पाया। बेहतरीन कैच लिया है फील्डर ने, बिल्कुल गेंद के नीचे थे, कोई गलती नहीं की और इस तरह से डिपार्ट हुआ ताहिरी पिंडी का, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 21 रन स्कोर किए थे।